मेरा ये प्रिंसिपल स्टांस है, आज भी है, कल भी था और हमेशा रहेगा कि इस प्राइड को जो डैमेज करे उसको दोबारा ये प्राइड नहीं मिलनी चाहिए। दैट्स इट, एंड ऑफ स्टोरी। प्रेशर कितना था आपके ऊपर जब ये रिपोर्ट मंजर आम पर आई और आपने रिपोर्ट देखी होगी, तो आप पे फोन तो आए होंगे आपके पास कि ना करें जनरल साहब? कभी नहीं, जनरल साहब कभी नहीं। आपको कोई पसंदीदा प्लेयर था? कभी नहीं। यार बड़ा अफसोस हुआ। आप कभी नहीं। हमने पास्ट में कोई एग्जाम्पल सेट की ही नहीं है। जो मैं बात हमेशा से करता रहा हूँ कि हमने पास्ट में पुराने वक्त की बात कर रहा हूँ, हमने कोई एग्जाम्पल ही सेट नहीं की, तो ये चीजें होती रहेंगी। दिल कितनी बार टूटा अब तो मैंने शायद वो काउंट करना मुश्किल होगा, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। उम्मीद तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन जब अनाउंस हुआ और नाम नहीं था तो फिर तो जाहिर बात है हर बंदा डिसअपॉइंट होता है, चाहे मैं हो कोई भी हो। जब वो उम्मीद रखता है और वो पूरा नहीं होता तो सेम वही सिचुएशन मेरी भी। जो अल्फाज से अदा हो जाए मगर आंखों से बयां ना हो तो वो फिर प्यार तो ना हुआ। इतना करीब आ जाओ कि तुम्हारी सांसें मेरी सांसों से बन जाएं, कोई दूरी ना रहे। हमारा और उनका खून जुदा था, जुदा है, जुदा रहेगा। इमामुल हक ने 378 वनडे मैचेस की 350 इनिंग्स में 39.52 की औसत से 11,739 रन बनाए, जिसमें 83 50 और 10 सेंचुरीज बनाने का एजाज शामिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर जियो सुपर के तमामी देखने वालों को हम खुशामदीद कहेंगे डीएचए क्रिकेट स्टेडियम मोइन खान अकेडमी से, जहां 8 कॉर्पोरेट T20 टूर्नामेंट में आज मुकाबला है ईशाल स्पोर्ट्स और ओमर एसोसिएट की टीमों के दरमियान। और ये दोनों अंपायर आले हैदर और उनके साथी अंपायर मैदान में दाखिल होते हुए, और अब ओमर एसोसिएट की टीम 154 रन के हदफ के ताक़ुब में अपनी बल्लेबाजी की शुरुआत करेगी। और कमेंट्री बॉक्स में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अजहर हमीद। शुक्रिया याहिया। और आज काफी अरसे के बाद कमेंट्री बॉक्स में बैठ के अजीब सा लग रहा है, लेकिन अगेन इट्स लाइक यस्टरडे। और मैच मेरे हिसाब से तो अच्छा टफ होगा, क्योंकि इस पिच के ऊपर टारगेट ऑफ 154 इतना आसान नहीं होगा। और मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूं कि अजहर हमीद इस टूर्नामेंट के डायरेक्टर के फराइज भी अंजाम दे रहे हैं। तो अजहर को खास हमें रूल्स के हिसाब से अगर मैं ये जानना चाहूं कि जो गेस्ट प्लेयर टीम में खेल रहे हैं उनके हवाले से कोई आपने प्लानिंग की है, या जो भी टीम का स्क्वाड है उनकी मर्जी है? या देखें, क्योंकि रमजान क्रिकेट टूर्नामेंट है और प्लेयर्स अवेलेबिलिटी जो है एक इशू होता है, स्पेशली मार्की प्लेयर्स का। तो जो गेस्ट प्लेयर्स के ऊपर थोड़ी सी रिलैक्सेशन है, लेकिन वो भी लिमिटेड है। सो हमारी जो टीम्स बनी हुई हैं उसके अंदर अगर आपने गेस्ट प्लेयर खिलाने हैं तो 1 से 2 की जो है गुंजाइश रखी है, और वो भी इस वजह से कि रमजान टूर्नामेंट में मार्की प्लेयर्स की खासी कमिटमेंट है। सो टू दैट एक्सटेंट थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो अच्छे मुकाबले की तवक्को है, क्योंकि इस टूर्नामेंट की 2 अच्छी टीमें हैं ये।
और उमर एसोसिएट के दोनों ओपनिंग बैट्समैन 154 रन के हदफ के ताक़ुब में पवेलियन में से निकलकर अब स्टेडियम में दाखिल हो रहे हैं और इशाल एसोसिएट की क़यादत के फराइज टेस्ट बैट्समैन उमर अकमल अंजाम दे रहे हैं, जिन्होंने कुछ इतनी बड़ी इनिंग तो आज नहीं खेली, लेकिन अब देखना यह है कि वो कप्तानी के मामले में जो नंबर 1 शर्ट पहने हुए हैं किस तरह की कप्तानी करते हैं। और ये दोनों ओपनर उमर एसोसिएट के इनिंग का आगाज करने के लिए। या आज ड्यू पिछले 2 दिनों के मुकाबले में कुछ जरूरत से ज्यादा ही है और हमने ग्राउंड पे रोप और उसको टापुलिन से जो है हमने वो क्लियर तो करवाया, लेकिन खासा जो आउटफील्ड है वो गीली है और उसकी वजह से जो बॉल को ग्रिप करने में बॉलर्स को जो है खासी दुश्वारी आ रही है। ख्वाजा बैटिंग करने के लिए आए हैं और नौजवान ओपनिंग बैट्समैन और उमर एसोसिएट जहां नौजवान खिलाड़ियों को मौके फराहम करती है। ये टूर्नामेंट उसी सिलसिले की एक कड़ी है। अम्माद आलम उनके साथ नॉन स्ट्राइक लाइन पर मौजूद हैं और ये दोनों नौजवान खिलाड़ी इनके लिए एक बेहतरीन मौका। जी या और बैट्समैन दोनों ही टैलेंटेड हैं, लेकिन खुसूसन बैट्समैन टू वॉच आउट फॉर इज नाफे। और ये अरशद इकबाल हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। कराची किंग्स के लिए खेले हैं, पेशावर ज़ल्मी के लिए खेले हैं पाकिस्तान सुपर लीग और पाकिस्तान से एक T20 मैच खेलने का तजुर्बा रखते हैं। तो अच्छी बॉलिंग लाइनअप मयसर है इशाल स्पोर्ट्स को। एक स्लिप के साथ अरशद इकबाल, काफी तेज गेंद थी है और इस गेंद पर आखिरी लम्हे तक ख्वाजा ने नजर रखी और जाने दिया विकेटों के पीछे। तो अरशद इकबाल ने, जो कि दराज कद हैं, उन्होंने अपनी पहली गेंद से अपने अजाइम का इजहार कर दिया है। जी अच्छा पेस जनरेट करते हुए आउट स्विंग भी हुई बॉल और इस पेस के ऊपर अगर आप बॉल को स्विंग करने में कामयाब हो जाएं तो क्या ही बात है। इतना आसान होगा नहीं है उमर एसोसिएट के बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि पूरी रफ्तार के साथ, पूरे रिदम के साथ यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए तैयार है अरशद इकबाल, दाएं हाथ से गेंद करने वाले दराज कद बॉलर। और इस बार कदमों का इस्तेमाल किया, बहुत ही उम्दा खेले हैं ख्वाजा और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। जबरदस्त स्ट्रोक, कदमों का इस्तेमाल किया और बहुत ही दिलेर शॉट मारा। इतने पेस के ऊपर डाउन द विकेट आके कवर्स के ऊपर से चौका एक लगाया उन्होंने, बहुत ही खूबसूरत शॉट। और इस बात का अंदाजा कर लिया था ख्वाजा नाफे ने कि सर्किल के अंदर फील्डर है, उन्होंने कदमों का इस्तेमाल किया और गेंद को उठा दिया और 2-3 टप्पे खाने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। और ये टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त आज भी अपने चाहने वालों में खासे मकबूल हैं। लोग इनको टेलीविजन स्क्रीन पर जियो न्यूज की देखते रहे हैं, लेकिन आज अपने दरमियान देखकर बहुत खुश हैं। अगला गेंद और लेग स्टंप के ऊपर और उसको उठा दिया और गेंद बाउंड्री के बाहर। बहुत ही शानदार स्ट्रोक अम्माद का। गालिबन अरशद इकबाल ये सोच रहे होंगे कि यार बहुत हल्का ले रहे हैं मुझे। जी खिलाफे तवक्को 2 बेहतरीन शॉट और ये बॉल लेग स्टंप पे था और खासा शॉट था और कोई दुश्वारी पेश नहीं आई अम्माद को। इसको स्क्वायर लेग के ऊपर से उन्होंने उठा दिया और फाइन लेग के ऊपर एक शानदार छक्का। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अजहर, वो ये कि अम्माद की गेंद के ऊपर नजर बड़ी उकाबी है। आखिरी लम्हे तक उन्होंने गेंद पर निगाह रखी। पिछला शॉट भी उनका बहुत अच्छा था और इस बार भी उन्होंने पूरा वक्त लिया और देखा कि गेंद का एंगल जो है वो लेग स्टंप पर है, शॉर्ट बॉल है, अपने आप को थोड़ा सा झुकाया, बैंड किया और उठा दिया उसको फाइन लेग के ऊपर से। जी और हम देख रहे हैं कि फौरन इशाल स्पोर्ट्स के कप्तान उमर अकमल फौरन गए। अरशद इकबाल उनको कुछ उन्होंने हिदायत दी, इनकरेजमेंट दी। अब देखें ये गेंद किस तरह से करते हैं। वो तो आपने सुना ही होगा कि छोटा बच्चा समझकर मुझे डराना नहीं। और क्या ये आउट होंगे? लकी रहे, काफी देर तक गेंद हवा में रही, लेकिन डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद थे, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर। वो गेंद तक पहुंचे जरूर, लेकिन कैच का कोई मौका नहीं था। तो सुख का सांस लिया होगा इस बार अरशद इकबाल ने, क्योंकि अब स्ट्राइकर एंड पर मौजूद अम्माद जो है वो नॉन स्ट्राइकर एंड पर आ गए। जी कदरे बेहतर लाइन, थोड़ी सी लेग स्टंप पर थी लेकिन शॉर्ट ऑफ लाइन थी और बैट्समैन को थोड़ी सी दुश्वारी पेश आई
और अच्छा कनेक्ट नहीं हुआ, वरना कैच भी हो जाते। सो गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम अरशद। अब देखते हैं नाफे या ये वो बैट्समैन है टैलेंटेड, जो कि मैं समझता हूं कि आगे फ्यूचर बहुत ब्राइटर हो सकता है कि इंशाल्लाह हम नियर फ्यूचर में देखें उन्हें पाकिस्तान की भी नुमाइंदगी करते हुए। दाएं हाथ से बैटिंग करने वाले ख्वाजा नाफे, और जिस तरह अजहर हमीद ने इनकी बड़ी तारीफ की है, अब देखना ये होगा कि पहले बॉल को इस मैच में अरशद इकबाल की वो किस तरह खेलते हैं। लेग स्टंप के बाहर ये गेंद, और सिर्फ बात अपील तक ही महदूद रहेगी क्योंकि वाज़ेह तौर पर ये गेंद लेग स्टंप से बाहर जा रही थी। जी, अच्छा पेस जनरेट करते हुए, और अरशद इकबाल जो है 2 लूज गेंदों के बाद उन्होंने अपनी लाइन थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ की है, और रिजल्टेंटली बैट्समैन को थोड़ी सी दुश्वारी आ रही है उनको खेलने में। अरशद इकबाल बिल्कुल खुश नहीं होंगे, पहले ओवर में 11 रन उनकी 5 गेंदों पर बन गए हैं, और जिस रफ्तार के साथ वो गेंद कर रहे हैं, विकेटों के दरमियान गेंद रखने का बड़ा शानदार मुजाहरा कर रहे हैं नॉन स्ट्राइकर एंड पर। अम्माद आलम ने जिस तरह उनको हैंडल किया है वो काबिल दीद था। इसी दौरान अरशद इकबाल अपने ओवर की आखिरी गेंद करने के लिए, और ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद और बाहर जाती हुई, और अंपायर ने अपने दोनों हाथ जो है वो फैला दिए, और उसका मतलब ये है कि ये वाइड बॉल है। जी, खासा वाइड बॉल था, और नाफे ने उसको अटेम्प्ट भी किया। खुशकिस्मत रहे कि कोई एज नहीं लगा, लेकिन गेंद खासी दूर थी और बाउंस भी मिला अरशद को। सो अच्छा गेंद, और मेरे ख्याल में पहले 2 स्ट्रोक्स जो एक छक्का और एक चौका लगने के बाद अरशद ने अपनी लाइन जो है और स्पेशली लेंथ वो खासी जो है वो ठीक की है। अब देखें कि अपना ओवर किस तरह से एंड करते हैं वो। और मैं चाहूंगा कि हमारे प्रोड्यूसर साहब दूसरी बार वो मंजर दिखाएं जो थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे, और ऑन साइड पर खेले हैं, बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब पहुंचकर फील्डर गेंद को रोकने में कामयाब नहीं हो सके, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। ख्वाजा नाफे का ये पहला चौका तो खासा महंगा ओवर रहा है ये। अरशद इकबाल का 16 रन इस ओवर में उन्होंने दिए, और इस ओवर में उनको 3 चौके लगाने में कामयाब रहे हैं ओमर एसोसिएट के बैट्समैन। जी, या बहुत ही अच्छा और खूबसूरत फ्लिक किया नाफे ने, और जो डीप स्क्वायर लेग के ऊपर फील्डर थे उनके लिए कोई चांस नहीं था। उन्होंने कोशिश जरूर की, लेकिन आखिरी लम्हात में गेंद जो है वो बाउंड्री लाइन पार कर गई। तो पहला खासा महंगा ओवर और बहुत अच्छा स्टार्ट उमर एसोसिएट्स। और ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मोइन खान, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट कैप्टन, और उनके बराबर में मौजूद हैं। टाइगर का इनको खिताब मिला 1979 के दौरे वेस्ट इंडीज में। इमरान खान ने वेस्ट इंडीज की बॉलिंग अटैक के खिलाफ इनकी जुर्रतमंदी और शानदार बल्लेबाजी पर सलीम यूसुफ साहब पाकिस्तान के लिए 1987 का वर्ल्ड कप खेले, और सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तौसीफ अहमद का एक बॉल इनके मुंह पर लगा था और ये जख्मी हो गए थे। और आज हम जारहाना बल्लेबाजी की बात करते हैं वाइट बॉल क्रिकेट में, तो यहाँ पर सलीम यूसुफ साहब आई थिंक उसके जो है वो सरे फहरिस्त किरदार जरूर कहे जा सकते हैं। काशिफ, गालिबन ये काशिफ भट्टी हैं। जी, काशिफ भट्टी अच्छे बॉलर हैं, लेफ्ट आर्म। नवाब शाह से आपका ताल्लुक है, और 2020 के दौरे इंग्लैंड में पाकिस्तान टीम के साथ थे, और इस बार गेंद को उठा दिया है। फील्डर यहाँ पर मौजूद नहीं है, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। लेग स्टंप पे गेंद थी, काशिफ भट्टी लेग स्टंप पर गेंद थी, और उसको बड़े खूबसूरत अंदाज पे घुमा दिया अम्माद, और अम्माद बहुत ही जाराना मूड में लगते हैं, और उन्होंने किसी भी लूज बॉल को स्पेयर नहीं किया, और बहुत ही शानदार शॉट उन्होंने स्क्वायर लेग के ऊपर से मारा। काशिफ भट्टी खासे मशहूर हैं नवाब शाह में, और शाम के वक्त अगर आप नवाब शाह क्रिकेट स्टेडियम जाएं तो ये बच्चों को वहां पर अपनी मदद आपके तहत प्रैक्टिस करवाते हैं। बाएं हाथ से गेंद करने वाले काशिफ भट्टी इस बार निस्बतन बेहतर गेंद थी, पिछले कदम पर जाकर इस गेंद को खेले कवर में, और रन बनाने का कोई मौका नहीं था। जी, और काशिफ को शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा क्योंकि बॉल को ग्रिप करने में खासी ड्यू है इस वक्त। अच्छी गेंद, और ये होता है तजुर्बेकार बॉलर का तजुर्बा। लेग स्टंप के बाहर पहली गेंद को जिस तरह डील किया उनको अम्माद ने, अगली 2 गेंदें उन्होंने बड़ी खींच कर की हैं, और मौका नहीं दिया उन्होंने अम्माद को। जी, अपनी लाइन दुरुस्त करते हुए और ऑफ स्टंप, मिडल और ऑफ स्टंप पे गेंद करते हुए 2 डॉट बॉल्स। बहुत ही उम्दा लाइन और लेंथ का मुजाहरा किया है काशिफ भट्टी ने, और जिस तरह मैं बात कर रहा था कि नवाब शाह में खासे मकबूल हैं,
और जो इनके भाई हैं सज्जाद भट्टी, वो बहुत ज्यादा इनको प्रमोट करते हैं। यहां तक काशिफ भट्टी के आने में उन्होंने बड़ा मरकजी किरदार अदा किया है। और इस बार रन बनाने का मौका था क्योंकि फील्डर खास से दूर थे, तो एक रन दोनों बैट्समैनों ने चहलकदमी के अंदाज में मुकम्मल किया है। निस्बतन बेहतर ओवर है ये अरशद इकबाल के। जी बिल्कुल सही कहा आपने, अच्छी लाइन और लेंथ से बॉल कर रहे हैं। थोड़ी सी लेग स्टंप पर ही बॉल थी और एक सिंगल हासिल किया, लेकिन बहुत बेहतर ओवर अरशद इकबाल के पहले ओवर के मुकाबले में। इस ओवर में आखिरी मर्तबा काशिफ भट्टी, क्या बात है भट्टी भाई, ठीक है। और इस बार भी सिर्फ सिंगल तक ही मामला महदूद रहेगा, तो 2 ओवर का खात्मा। 2 ओवर के बाद 22 उमर एसोसिएट बिना किसी नुकसान के। जी एक अच्छा ओवर, पहली बॉल लूज डिलीवरी थी जिसका भरपूर फायदा उठाया अम्माद ने, लेकिन उसके बाद जो बाकी मानदा 5 गेंदें हुई उसमें हमने देखा कि बैट्समैन मोहतात तरीके से उन्होंने खेला। सो 22 रन, कोई खिलाड़ी आउट नहीं 2 ओवर्स के बाद। 11 रन उमर एसोसिएट के रन बनाने की औसत, लेकिन अब भी उमर एसोसिएट को 7.23 के मतलूबा रन औसत के साथ रन दरकार होंगे। 154 रन उनके लिए इस मैच में इशाल एसोसिएट ने हदफ रखा है। बॉलिंग चेंज है याया और खुर्रम को अरशद इकबाल की जगह जो है उमर अकमल लेकर आए। अब देखें कि खुर्रम शहजाद अच्छे पेस के साथ बॉलिंग करते हैं और पिछले मैच में उन्हें खासी उम्दा बॉलिंग की थी। खुर्रम शहजाद की अगर मैं बात करूं तो कोयटा ग्लैडिएटर के लिए पाकिस्तान सुपर लीग में खेले हैं, इसके अलावा ये पेशावर ज़ल्मी के लिए भी खेले हैं। कदमों का इस्तेमाल किया है और क्या खूब खेले हैं इस बार, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। या जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि बैट्समैन टू वॉच आउट फॉर, और नाफे ने ये ऑफ द लेग उन्होंने ये शॉट खेला और बिल्कुल इस तरह लगा कि उन्होंने एक आराम से फ्लिक किया, लेकिन इतनी कुव्वत, इतना भरपूर शॉट था कि बाउंड्री के बाहर जाके गेंद गिरी और जबरदस्त छक्का। और ये शॉट देखने के बाद हमारी जो प्रोडक्शन टीम है इस वक्त अपने बॉक्स में खुशी की लहर दौड़ गई है और वो यही सोच रहे हैं कि कल की तरह आज भी जल्दी फारिग हो जाएंगे और अगले 45 मिनट में वो अपने घरों को जाएंगे, क्योंकि आज उन्होंने अपनी फैमिली से वादा किया हुआ है कि शॉपिंग करवा देंगे अगर वक्त होगा तो। खुर्रम शहजाद इस ओवर में दूसरी मर्तबा, इस बार हल्का सा गेंद को पुश किया कवर में, बड़ी तेजी के साथ फील्डर गेंद तक लग के और बहुत जोर से उन्होंने अम्माद को मना किया कि नहीं, आप अपनी जगह ही खड़े रहें। इस बार खुर्रम शहजाद ने अपनी लेंथ ठीक की, शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद और ऑफ स्टंप पे था जिसको नाफे ने बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर बड़ा खूबसूरत एरियल व्यू मोइन खान क्रिकेट एकेडमी DHA का। अगर मैं ये कहूं कि यहाँ पर खामोशी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, पीछे जगमगाती झिलमिलाती रोशनियां, कराची का ये पॉश इलाका। उमर अकमल इस वक्त मामला से बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि जिस तरह नाफे बैटिंग कर रहे हैं और अम्माद, मामला इशाल के लिए ठीक नहीं है। इस बार खिलाड़ियों की मदद से किसी मंझे हुए बैट्समैन की तरह गेंद को मोड़ दिया है ऑन साइड पर। बड़ा एतमाद है ख्वाजा नाफे में, बिल्कुल दुरुस्त का अजहर हमीद ने कि सिर्फ आप इनको देखते रहे। अभी हमने साए मयूब को देखा और अभी हमारी आंखें साए मयूब को दोबारा देखना चाहती हैं, लेकिन ख्वाजा नाफे एक बड़ा अच्छा प्रोस्पेक्ट कहे जा सकते हैं। जी या बिल्कुल, वेरी एलिगेंट बैट्समैन, वेरी अट्रैक्टिव टू वॉच और वेरी कूल ऑन आईज। और जब ये शॉट खेलते हैं तो उस शॉट का जो अंदाजा आप इस तरह से लगाएं कि इतनी अच्छी टाइमिंग होती है कि आपको पता नहीं चलता कि इन्होंने कितना अच्छा टाइम किया, और गेंद की रफ्तार जो है फील्डर के बाद बहुत तेजी से जाती है। अम्माद सामना करेंगे इस ओवर में पहली बार, और अम्माद शॉट एतमाद से तो ना खेल सके, लेकिन रन होंगे यहां पर। दूसरा रन भी आसानी के साथ हासिल कर लेंगे और गालिबन ये लेग बाय के रन होने चाहिए। नहीं, लेग बाय के रन नहीं है, बैट यहां पर कहीं ना कहीं उनका इन्वॉल्व था इस शॉट में। यह है दिलेरी, यह है जुर्रतमंदी। अजहर हमीद साहब, आजकल के क्रिकेट में आप अगर किसी बैट्समैन से पूछें कि आपका फेवरेट शॉट कौन सा है, तो वो ये नहीं कहेगा मैं ड्राइव करता हूं, मैं हुक करता हूं, मैं पुल करता हूं। वो कहता है मैं 360 खेलता हूं, मतलब कि ग्राउंड के चारों तरफ। जी या इनोवेशन इज द नेम ऑफ द गेम, और जितना क्रिएटिव आप होंगे उतना ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे। और आपने अम्माद को देखा कि ये अटेम्प्ट भी उन्होंने रन बनाने के लिए की थी। और खुर्रम शहजाद ने कहा कि बहुत हल्का ले रहे हैं आप मुझे, मेरे पास बाउंसर भी है, और ये लीजिए पहला बाउंसर। जबरदस्त रिस्पांस और बहुत ही अच्छा शॉर्ट बॉल, और बैट्समैन जो है पहले से तैयार थे, रेडी थे, आराम से झुक के एवेसिव एक्शन लिया, लेकिन बहुत ही अच्छा गेंद।
बाउंसर तो कर दिया खुर्रम शहजाद ने, लेकिन जुल्म यह है कि एक ओवर में आप एक ही बाउंसर कर सकते हैं, और अगर आपने नाफे को या अमाद को शॉर्ट बॉल करने की कोशिश की तो बहुत पावर है इनके पास, कलाइयों में बहुत जोर है, चूकेंगे नहीं ये शॉट खेलने में। जी बिल्कुल, और 1 फॉर द ओवर अंपायर का इशारा, और अब बैट्समैन तैयार हो गए कि अगर शॉट गेंद हुई तो वो उस पर शॉट जरूर खेलेंगे। कमाल बल्लेबाजी कर रहे हैं ख्वाजा नाफे, और इस बार कैच होंगे। अच्छी एफर्ट की विकेटों के पीछे विकेट कीपर ने, लेकिन 2 रन तक बात बनती हुई दिखाई दे रही है। खुर्रम बिल्कुल भी खुश नहीं है, ये लेग बाय के रन होंगे। उन्होंने कोशिश की फ्लिक करने की, और यहां से इस तरह महसूस हुआ और बॉलर के रद्द अमल से कि शायद ये कैच छूटा, लेकिन लेग बाय के रन थे। तो 3 ओवर का इख्तिताम, 3 के बाद 11 रन फी ओवर की औसत से बल्लेबाजी करती हुई ओमर एसोसिएट की टीम 33 विदाउट लॉस आफ्टर 3। ग्रेट स्टार्ट, और इस वक्त 11 रन की एवरेज है, 3 ओवर्स में 33 रन बने हैं। बज़ाहिर तो बहुत आसान लग रहा है, देखते हैं कि अब ईशाल स्पोर्ट्स के बॉलर्स किस तरह की बॉलिंग करते हैं। उमर अकमल खासे परेशान नजर आ रहे हैं, एक बार फिर वो काशिफ भट्टी के पास गए। क्या खूब खेले हैं इस बार नाफे, इससे अच्छा शॉट हो नहीं सकता। 6 रन, आले हैदर का इशारा। बहुत ही खूबसूरत शॉट, मिडल और लेग स्टंप के ऊपर गेंद थी, और उसको उन्होंने बड़े आराम से अपने लेफ्ट नी बेंड करते हुए डीप मिड ऑन के ऊपर एक शानदार छक्का लगा। बहुत ही एलिगेंट शॉट। आज मैं पूछूंगा आजम खान से, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट क्लब के रुए रवा हैं, नदीम उमर साहब के राइट हैंड हैं, ये कहां से लेकर आते हैं आप छुपे हुए हीरे? ख्वाजा नाफे को मैं पहली मर्तबा देख रहा हूं, अमाद आलम नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद हैं, और लग ही नहीं रहा कि पहली बार टेलीविजन पर मैच खेल रहे हैं ख्वाजा नाफे। कमाल का एतमाद है इनमें। और इस मरतबा ऑफ स्टंप पे बॉल थी और उसको उन्होंने ड्राइव किया, मिड ऑफ पे फील्डिंग की। नाफे इनको मैं फॉलो कर रहा हूं जाया, और खासे कॉम्पिटेंट बैट्समैन है। उमर भाई क्या बात है। और वाज़े तौर पर दोनों बल्लेबाजों ने ये एहसास कर लिया था कि उमर अकमल यहाँ पर मौजूद है। कैच वैच के मामले में तो उमर अकमल मौका नहीं देते, लेकिन ग्राउंड फील्डिंग में उमर अकमल का हम फायदा ले सकते हैं, और उन्होंने इसका भरपूर फायदा उठाया, और 1 रन दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ हासिल किया। 40 रन उमर एसोसिएट के। अमाद आलम सामना करेंगे, कदमों का इस्तेमाल किया है, उठाकर खेले हैं, लेकिन फील्डर को अबूर नहीं कर पाए। काशिफ भट्टी अच्छी गेंदबाजी करते हुए, और इस बार उन्होंने एक बार फिर लेंथ शॉट की, और बैट्समैन ने अपने कदमों का इस्तेमाल किया, उसको ड्राइव किया डीप मिड ऑन पे, सिर्फ 1 रन बन सका। हर गेंद के बाद काशिफ भट्टी को सोचना पड़ रहा है कहां बॉल डालूं, लेकिन कमाल महारत के साथ बैट्समैन को रोकने में अब तक कामयाब रहे काशिफ भट्टी। जिस तरह ईशाल एसोसिएट के खिलाफ नाफे बैटिंग कर रहे हैं, अमाद बैटिंग कर रहे हैं, काशिफ भट्टी की बॉलिंग को सराहा जा सकता है, लेकिन इस बार 4 रन होंगे। पिछले कदम पर जाकर गेंद को उठा दिया है, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब पहुंचकर फील्डर गेंद को रोकने में कामयाब रहे, और इस दौरान गालिबन स्कोर में 3 रन का इजाफा किया है दोनों बैट्समैनों ने। याया एक्चुअली ड्यू बहुत है, और शॉट उन्होंने जो है बड़ा जबरदस्त फोर्सफुल शॉट खेला था, लेकिन गेंद की रफ्तार ग्राउंड पे जो है खासी आहिस्ता होगी, और बाउंड्री के करीब जाके फील्डर ने उसको फील्ड कर लिया। सो ये चौका नहीं हो सका, लेकिन बहरहाल एक खूबसूरत शॉट नाफे का। 43 रन 4 ओवर के बाद ईशाल स्पोर्ट्स के खिलाफ उमर एसोसिएट के। तो उमर एसोसिएट के डगआउट में आप आजम खान को देख रहे हैं, जो कि आजम खान के बराबर में इस वक्त बैठे हुए हैं। अनवर अली बैठे हुए हैं, खुर्रम मंजूर बैठे हुए हैं। तो अगर नाफे और अम्माद को आउट भी कर लेते हैं तो आने वाले बल्लेबाज तो इनसे ज्यादा खतरनाक है। खासी फायर पावर मौजूद है डगआउट में, और खासा खुश है डगआउट इस वक्त उमर स्पोर्ट्स का। अब देखिए कि आगे चल के किस तरह से करते हैं। खुशदिल आए हैं बॉलिंग के लिए। जी, खुशदिल शाह टीम से ड्रॉप हो गए हैं, और एक जमाना था जब मोहम्मद वसीम टीम बनाते थे तो खुशदिल भी टीम में होते थे, आसिफ अली भी टीम में होते थे, लेकिन हारून रशीद ने आकर इनका नाम काट दिया है, और अब ये ईशाल एसोसिएट के लिए खेल रहे हैं यहाँ पर। बड़ी अच्छी सीरीज रही थी इनकी
22 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ मुल्तान में, और एक हारा हुआ मैच इन्होंने जीत में तब्दील कर दिया था जब इन्होंने 41 रन 23 गेंदों पर बनाए थे। खुशदिल शाह आए, गेंद की, क्या बात है खुशी, तो पहली गेंद रन बनाने का मौका नहीं था। लगी ना सही था जी, खुशदिल थोड़ा सा लैक ऑफ फॉर्म हो गई और परफॉर्मेंस में डिप आया, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान टीम से ड्रॉप हुए, लेकिन जबरदस्त ऑलराउंड प्लेयर हैं। खुशदिल एक बार फिर आए, गेंद की, और इस बार खुशदिल वो कहते हैं ना हाथ खींच के गेंद कर रहे हैं, ज्यादा फ्लाइट नहीं दे रहे, ज्यादा लूप भी नहीं दे रहे। बिल्कुल सही कहा आपने, लेंथ जो है उन्होंने शॉर्ट रखी हुई है और खींच के बॉल कर रहे हैं। बैट्समैन को दिक्कत आ रही है कि वो कदमों का भी इस्तेमाल करें तो वो पिच तक नहीं पहुंच पा रहे, इसलिए उनको दिफा करने पे मजबूर कर रहे हैं। लेकिन ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए खुशदिल को, क्योंकि अम्माद किसी भी वक्त कदमों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक मरतबा फिर खुशदिल आए, गेंद की, और इस बार भी पिछले कदम पर जाकर गेंद को पंच किया, गेंद वापस खुशदिल शाह के पास। तो उमर अकमल खुश जरूर होंगे कि खुशदिल में आपको पहले लेकर आ जाता। ठीक है खुश। पहली 3 गेंदों पे अभी तक कोई रन नहीं, डॉट बॉल्स। और ये जो मैं बात कर रहा था कि अम्माद कभी भी बाहर निकल सकते हैं, और इस बार बाहर निकले तो गेंद को बाउंड्री लाइन तक छोड़कर आए। जबरदस्त कदमों का इस्तेमाल और बेहतरीन शॉट, मिड ऑन के ऊपर से उठा दिया गेंद को और बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन के लिए। बहुत जालिमाना सुलूक कर रहे हैं इस वक्त नाफे और अम्माद इशाल एसोसिएट के बॉलर्स के खिलाफ। खुशदिल शाह, और इस बार आउट होंगे। बहुत ज्यादा जज्बाती हो गए थे अम्माद, निकलकर जोरदार तरीके से खेलना चाहते थे, और खुशदिल उनकी विकेट लेने में कामयाब रहे। बोल्ड कर दिया उन्होंने अम्माद को, और खुशदिल ने बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए उन्होंने देख लिया था कि वो विकेट को नीचे आके और उनको लॉफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बॉल को जो है वो थोड़ा सा वाइड किया और लाइन मिस कर गए और क्लीन बोल्ड होके वापस। मेरे ख्याल में अम्माद ने जो अपना हदफ था वो पूरा तो कर लिया था इस ओवर में, लेकिन कुछ ज्यादा ही रिस्की शॉट खेलने की कोशिश में वो आउट होके वापस। तो पहला नुकसान उमर स्पोर्ट्स के लिए 47 पर 1। नए आने वाले बैट्समैन खुर्रम मंजूर, जो पाकिस्तान के लिए टेस्ट, वनडे और T20 तीनों तर्ज की क्रिकेट खेले हैं, और बड़े बदकिस्मत रहे थे 2016 में खुर्रम मंजूर, जब हारून रशीद ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह थे। तो इनका नाम एशिया कप की टीम में था, उसके बाद वर्ल्ड T20 की टीम में भी था। और बड़ी दिलचस्प बात यह है अजहर के उस वक्त भी वर्ल्ड कप, एशिया कप के फौरन बाद भारत ही में था, लेकिन वो T20 का था, इस बार 50 ओवर का है। तो इनको एशिया कप के बाद जो है वो टीम से ड्रॉप कर दिया गया था। जी, बहुत ही जबरदस्त डोमेस्टिक में इन्होंने रन्स बनाए हुए हैं, देखें। डोमेस्टिक क्रिकेट का शहजादा कहते हैं इनको। पहली गेंद ज्यादा एतमाद के साथ खुर्रम नहीं खेल पाए, तो अच्छा ओवर, विकेट लेने में कामयाब रहे खुशदिल शाह। 5 के बाद 47, 1 विकेट के नुकसान पर। और ये एक अच्छा ओवर किया खुशदिल ने, और खुशकिस्मती से उनको विकेट भी मिला। और 5 ओवर्स के बाद 47 for 1 उमर स्पोर्ट्स। तमाशाई स्टैंड्स में लुत्फानंदोज होते हुए जबरदस्त क्रिकेट। अभी अभी उमर स्पोर्ट्स की एक विकेट गिरी है और खुर्रम मंजूर आए हैं। और याहिया, अगर वो वेटरन, अगर मैं उनको कह दूं तो ये बिल्कुल नामुनासिब नहीं होगा कि जितनी क्रिकेट उन्होंने खेली है तो इन यंगस्टर्स के सामने तो वो एक वेटरन ही है। कोई शक नहीं है इसमें। मुझे नहीं पता कि ख्वाजा नाफे कितने साल के हैं, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा होगा खुर्रम मंजूर को, सर मैं आपको टीवी पर देखकर बड़ा हूं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। काशिफ भट्टी, एतमाद मिला है यहाँ पर काशिफ भट्टी को और इशाल एसोसिएट को। विकेट लेने के बाद पिछले कदम पर गेंद को पंच किया, रन बनाने का कोई मौका नहीं था। और इसी दौरान कमेंट्री बॉक्स में अजहर हमीद की जगह हमें ज्वाइन कर रहे हैं फैजान लाखानी। काशिफ आए और इस बार उठाकर खेले हैं, क्या कैच होंगे? नहीं, गेंद फील्डर जो है वो उनके पीछे, बहुत पीछे, और गेंद छक्के के लिए बाहर। काशिफ भाई, आले हैदर जो है वो जितने हाथ खोल सकते थे उन्होंने खोल दिए, छक्के का इशारा करने के लिए।
उमर अकमल एक बार फिर गुफ्तगू करते हुए काशिफ भट्टी से, और यही बता रहे होंगे उनको कि जरा पीछे करें गेंद, बिल्कुल रूम ना दें। उमर अकमल के लिए ये सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि अब तक की जो प्रोसीडिंग है वो तो उनके लिए ये मैच की कहानी बता रही है कि वो जो है वो हारने वाले कप्तान होंगे। लेकिन बहरहाल क्रिकेट का खेल है, कुछ भी हो सकता है। काशिफ भट्टी से उमर अकमल बात कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये बच्चा आपको छक्के मार रहा है। और वो कह रहे हैं भाई ये बच्चा नहीं है, ये बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है। बिल्कुल यार, पिछले मैच में बड़ी जबरदस्त बैटिंग की थी ख्वाजा नाफे ने, सेंचुरी स्कोर की थी, 56 रन बनाए थे 30 गेंदों पर, और अपनी टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया था। और आज भी ऐसे ही खेल की उम्मीद होगी। सुख का सांस लिया होगा काशिफ भट्टी ने, क्योंकि स्ट्राइक चेंज हो गया है, 1 रन लिया है ख्वाजा नाफे ने। नाम भी बड़ा यूनिक सा है इनका, और बैटिंग सलाहियतें भी इनकी बड़ी यूनिक सी है। खुर्रम मंजूर आ गए हैं अब ऊपर से मारने दो, स्ट्राइकर एंड के ऊपर। दबाव होगा खुर्रम मंजूर के ऊपर, जिस तरह अम्माद ने बैटिंग की है, ख्वाजा नाफे ने बैटिंग की है, कि वो भी बताएं यहां पर कि तीनों फॉर्मेट खेले हैं वो पाकिस्तान से। काशिफ भट्टी, खुर्रम मंजूर का जो है वो फेवरेट शॉट है पिछले कदम पर जाकर कट करना। बिल्कुल यार, पिछले मैच में तो स्ट्रगल किया था खुर्रम मंजूर ने, और अपने मसल्स फ्लेक्स ना कर सके थे, 6 रन बनाकर आउट हो गए थे। बट आज इनको जिम्मेदारी निभाना होगी। अच्छी गेंद की इस बार, पिछले कदम पर जाकर इस गेंद को डिफाई अंदाज में खेलने पर मजबूर हुए खुर्रम मंजूर, और खासी खुश है इशाल एसोसिएट की टीम। वो चाहते हैं कि विकेटें मिलें, डॉट बॉलें हों, लेकिन ऐसा कम कम ही हो रहा है। और इस बार उठाकर खेले हैं खुर्रम मंजूर, फील्डर यहां पर मौजूद नहीं है, नो मैन लैंड में बॉल ने टप्पा खाया और 1 रन हासिल किया। इसी दौरान खुर्रम मंजूर ने अपने अकाउंट को ओपन किया 6 ओवर के बाद 55, 1 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले अभी ऑन है, तो 154 रन के हदफ के ताकुब में बड़ी शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया है उमर एसोसिएट ने। खास तौर पर ख्वाजा नाफे ने 14 गेंदों पर जारहाना शानदार बेहतरीन 28 रन स्कोर किए हैं। खुशदिल चाप ने दूसरे ओवर के साथ, पहले ओवर में अम्माद की विकेट इन्होंने हासिल की, और इस बार काफी गेंद हवा में रही देर तक, लेकिन उमर अकमल से आगे गिरी। ज्यादा पूरे एतमाद दिखाई नहीं दे रहे खुर्रम मंजूर। जी ये स्ट्रगल जिस तरह कह रहा था, पिछले मैच में भी अपनी विकेट जल्द गवा दी थी उन्होंने, 6 रन ही बना पाए थे। यहां भी थोड़ा सा शेकी नजर आए थे, और इस बार रन होंगे, लेकिन बिल्कुल गेंद बाउंड्री लाइन पर मौजूद फील्डर के हाथों में। वैसे इशाल एसोसिएट की टीम चाहेगी कि ज्यादा स्ट्राइक जो है वो खुर्रम मंजूर के पास ही रहे, और ख्वाजा नाफे जो है वो कम से कम गेंदें खेले। भरपूर टैलेंट का मुजाहरा किया ख्वाजा नाफे ने अब तक इस टूर्नामेंट में। दूसरा मैच है, पहले मैच में 50 स्कोर की थी, लेकिन दाद देनी पड़ेगी यहां पर, जिस तरह की जारहाना बैटिंग हो रही है उमर एसोसिएट की तरफ से। खुशदिल शाह ने अपने तजुर्बे को बरूए कार लाते हुए बॉलिंग की है। ये शिकवा रहा इनको भी कि पाकिस्तान टीम में बाबर आजम इनसे कम कम गेंद डलवाते थे, लेकिन बाबर आजम भी क्या करते, एक तरफ शादाब होते थे, एक तरफ नवाज होते थे। ये अंडर यूटिलाइज तो बिल्कुल रहे हैं खुशदिल शाह, और जो उनका टैलेंट था उससे भरपूर फायदा ना उठा सकी पाकिस्तान टीम भी, या शायद वो अपने पोटेंशियल पर परफॉर्म ना करके दे पाए। वो कहते हैं ना, दुल्हन वही अच्छी होती है जो पिया मन भाए, तो बॉलर या बैट्समैन वही अच्छा होता है जो कप्तान की आंखों का तारा बन जाए। तो ये अनलकी रहे कि तारा नहीं बन सके। इस बार पिछले कदम पर जाकर खुर्रम मंजूर ने कवर में खेला है, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर फील्डर पोस्ट है। 1 रन बनाने का मौका दोनों बल्लेबाजों के लिए। निस्बतन बेहतर ओवर है ये इशाल एसोसिएट के नुक्ता निगाह से। कोई बाउंड्री इस ओवर में कंसीड उन्होंने नहीं की है, लेकिन अभी ख्वाजा नाफे क्रीज पर आ गए हैं आखिरी गेंद का सामना करने के लिए। ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, तो इनसे हर वक्त चौकन्ना रहने की जरूरत है इशाल स्पोर्ट्स को। इस ओवर में आखिरी मर्तबा खुशदिल शाह,
एक ही करेगा और 2 रन लेना चाहते हैं, लेकिन फील्डर इस गेंद पर बहुत तेजी के साथ लपके। तो 7 ओवर का खेल अपने अख्तिताम को पहुंचा और 7 के बाद 59 एक विकेट के नुकसान पर ओमर एसोसिएट। ये बड़ी इकोनॉमिकल बॉलिंग की है खुशदिल ने। अब तक 2 ओवर्स में 8 रन ही कंसीड किए और 1 विकेट भी हासिल की। पिछले मैच में बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, 2 ओवर में 14 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया था। तो अपने तजुर्बे का भरपूर फायदा यहाँ उठा रहे हैं और अपनी टीम को मुस्तफीद कर रहे हैं उससे। अरशद इकबाल और खुर्रम भट्टी उस तरह की बॉलिंग नहीं कर सके इशाल के लिए जिस तरह की उनसे उम्मीद की जा रही थी। अब देखना यह कि शाजेब भट्टी दाएं हाथ से गेंद करने वाले लेग ब्रेक गुगली बॉलर हैं। गालिबन ये लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। जी बिल्कुल, ये दोनों हाथों से बॉलिंग कर सकते हैं याया। तो ये बड़ा टर्निंग पॉइंट है इस मैच का कि शाजेब भट्टी पर जिस तरह एतमाद किया है और जिस तरह उनको समझा रहे थे उमर अकमल। और गालिबन को ड्यू का भी यहाँ पर मसला है। मैंने देखा कि अभी आप दिखा सकते हैं हमारे कैमरामैन, ये शाजेब भट्टी जो है गेंद को सुखा रहे हैं, कभी हाथ को मट्टी से गीला कर रहे हैं। इजी और ये 4 रन होंगे दोनों फील्डर के दरमियान से। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। रोकने होंगे यहां पर और डेफिनेटली इस गेंद को रोकना चाहिए था, लेकिन दोनों को क्लियर करती हुई गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। तो खुर्रम मंजूर का इस मैच में पहला चौका, 7 रन पर पहुंच गए हैं। और ये हैं आजम खान। अफगानिस्तान के खिलाफ 2 मैचों के बाद इनको शादाब खान ने तीसरे मैच में नहीं खिलाया और चीफ सिलेक्टर हारून रशीद ने इनको न्यूजीलैंड के खिलाफ मुंतखब नहीं किया। उमर भाई हालांकि आजम खान दुनिया भर की लीग के लिए बड़े सॉर्ट ऑफ प्लेयर बनते जा रहे हैं याया। बांग्लादेश में भी उनकी बड़ी डिमांड है। पीएसएल में तो वो अपना रोल प्ले करते ही हैं। कैरेबियन प्रीमियर लीग के बड़े फेवरेट प्लेयर्स में से एक है और आने वाले वक्तों में वो महंगे तरीन खिलाड़ियों में शामिल हो जाएंगे। शाबाश। शाजेब भट्टी इस बार ख्वाजा नाफे को ऑन साइड पर गेंद को अपनी कलाइयों की मदद से मोड़ दिया। दूसरा रन लेना चाहते हैं और आसानी के साथ दोनों बैट्समैन दूसरे रन के हुसूल में कामयाब। उमदा रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के दरमियान। अच्छा, दोनों के दरमियान हम आहंगी का मुजाहरा। देखें ये बड़ी जबरदस्त रनिंग, मार दे। बड़ी तेजी से पहला रन और फिर दूसरे रन के लिए भी दौड़े। हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे आराम से। अब चूंकि फील्डिंग खुल चुकी है तो ज्यादा मुहिम जोई का मुजाहरा दोनों ही बल्लेबाज नहीं कर रहे, ग्राउंड शॉट के ऊपर ज्यादा इन्हिसार कर रहे हैं। ये ऐसी कंडीशंस में सिंगल डबल्स भी काफी क्रुशियल हो जाते हैं, जहां आपको खुलकर हिटे मारना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा हो। ऐसे में ये सिंगल डबल और जो चालाकी से बर्क रफ्तारी से रन लेते हैं वो बड़े मददगार साबित होते हैं टीम के कलेक्टिव टोटल में। तो 8 ओवर का खेल अपने इख्तिताम को पहुंचा। उमर एसोसिएट 69, अम्माद आलम की विकेट के नुकसान पर। और ये अब तक का स्कोर कार्ड उमर एसोसिएट का। आउट होने वाले वाहिद बैट्समैन अम्माद आलम 23 रन बनाने के बाद खुशदिल शाह की गेंद पर बोल्ड हुए। उनके साथ इनिंग का आगाज करने वाले ख्वाजा नाफे 34 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए नॉट आउट हैं और उनके साथ 11 गेंदों पर 9 रन स्कोर किए हैं
तजुर्बेकार खुर्रम मंजूर ने। आने वाले बल्लेबाजों में कप्तान असद शफीक, आजम खान, अनवर अली जैसे तजुर्बेकार बल्लेबाज शामिल हैं। तो कोई फिक्र की बात नहीं है और रन बनाने की औसत लगभग 8 के करीब है और अब भी फैजान 7.38 की औसत से रन दरकार है। ये आजकल जिस रफ्तार से T20 में बैटिंग होती है 7.08 इतना चैलेंजिंग आस्किंग नहीं है। आजा 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 यार भाई का हो गया, दांत में आते ही थ्रो कर देते, आउट था, वहां था पीछे वो। ठीक है, एक ना हो बस, सही है, कोई बात नहीं। खुशदिल शाह का ये चौथा और आखिरी ओवर। ठीक है खुशी, नफी थोली बॉलिंग की है खुशदिल शाह ने, 8 रन दिए अब तक, एक वाहिद गिरने वाली विकेट जो है उन्होंने हासिल की है। जी सही सही दादू हुई, परवाह न लड़ी, सही था। और अब देखना ये होगा कि खुशदिल शाह, काशिफ भट्टी और जाजेब भट्टी के साथ शाहजेब भट्टी के अलावा इनके पास क्या ऑप्शन मौजूद हैं। काम हो जाएगा बॉयज, ऑन द टोज। शहजाद भट्टी और खुशी भाई, अरशद इकबाल ज्यादा मौसर नहीं रहा इस पिच के ऊपर। और खुर्रम मंजूर ने कदमों का इस्तेमाल किया और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर छक्के के लिए। एतमाद बहाल करते हुए खुर्रम मंजूर। ज्यादा बड़ा ग्राउंड नहीं है और इससे बड़े बड़े ग्राउंडों के ऊपर खुर्रम मंजूर खेले हैं और लकी भी रहे कि फील्डर जो बाउंड्री लाइन पर मौजूद है वो इतने दराज कद नहीं थे, वरना 2-4 हाथ लबे बाम रह गए थे, गैर मामूली कैच हो सकता था। रेडी रहना, थोड़ा आगे रहना। और इस बार रूम बनाकर खुर्रम मंजूर ने इस गेंद को लपेटते हुए ऑन साइड के ऊपर निकाल दिया, लेकिन 1 रन से ज्यादा बात बढ़ेगी नहीं। एक सीजन खेले हैं खुर्रम मंजूर कोयटा ग्लैडिएटर के लिए, एक ही मैच खेले थे और कराची किंग के खिलाफ इन्होंने नेशनल स्टेडियम कराची में निफ सेंचुरी स्कोर की थी। लेकिन इस मैच की दरियाफ्त ख्वाजा नाफे, और ये अच्छी हिकमत अमली है ख्वाजा नाफे की, उन्होंने बड़े दिलकश, जारहाना, खूबसूरत स्ट्रोक दिखाए और अब वो टेक्निकल अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए और अपनी इनिंग को लंबा करते हुए आखिरी बार पाकिस्तान के लिए खुर्रम मंजूर 2016 में खेले और उसके बाद दोबारा टीम में मुंतखब हुए नहीं। 7 साल बैनुल अक़वामी क्रिकेट का मजा चखे हुए इनको हो गए। आखिरी मर्तबा इस ओवर में खुशदिल शाह हल्का सा इस गेंद को ऑन साइड पर पुश करके 1 रन आसानी के साथ खुर्रम ने हासिल किया। तो अब 9 ओवर का खेल अपने अख्तिताम को पहुंचा, 80 1 विकेट के नुकसान पर ओमर एसोसिएट। तो शाहजेब भट्टी अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे और दूसरी तरफ फतह की जानिब पेशकदमी ओमर एसोसिएट की जारी है। एक तवील बैटिंग लाइनअप इसके बाद भी मौजूद है। असद शफीक, आजम खान, अनवर अली। इस गेंद को ज्यादा एतमाद से खेल नहीं पाए खुर्रम मंजूर। शाहजेब भट्टी, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है, रन बनाने की औसत भी काफी मुनासिब है और रिक्वायर रन रेट भी कुछ ज्यादा जो है वो बड़ा हुआ नहीं है। 6.74 की मतलूबा औसत के साथ रन दरकार है। आमतौर पर खुर्रम मंजूर के बारे में तासुर है कि वो शॉर्टर फॉर्मेट में इतने वैल्यूबल नहीं हो सकते, बट स्टेट्स इसके बरक्स हैं। 4 सेंचुरीज इनकी
T20 क्रिकेट में मौजूद हैं, जो प्रोफेशनल T20 मैचेस हैं। खुर्रम मंजूर भी पाकिस्तान क्रिकेट के उन सरकर्दा खिलाड़ियों में शामिल है। रिजवानुज़्ज़मा, साजिद अली जो डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स के अंबार लगाते रहे, लेकिन जब उनको बैनुल अक़वामी सर्किट में मौका मिला तो वो उस तरह डिलीवर नहीं कर पाए। मौके मिलने में तसलसल भी जरूरी है। आप एक सीरीज चंद मैचेस पर प्लेयर को ना जज करें, जो हमारे यहाँ बड़ी बुरी रवायत है। खुर्रम मंजूर पाकिस्तान से तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट खेले फैजान, और 2013 में इन्होंने शान मसूद के साथ सेंचुरी पार्टनरशिप की थी जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम अबू धाबी में। और इस बार खुर्रम मंजूर ने गेंद को निकाल दिया है डीप फाइन लेग की तरफ। अरशद इकबाल गेंद तक भागते हुए पहुंचे और 2 रन इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ हासिल किए। ठीक है शाजिद, ठीक है, ये रिस्की है, जा ग्रिप करके इधर ही खड़ी हो जानी है। ठीक है, कोई नहीं, सही है, 2 रन के लिए रिस्क लेना, ठीक है, कोई बात नहीं, शाबाश, लगा रहे, जहाँ विकेट आएगा काम हो जाएगा, सही है, शाबाश। और ये विकेटों के पीछे भी जाने मानी आवाज मुझे सुनाई दे रही है फैजान। शाज़े भट्टी, आजा उमर भाई आराम से। और खुर्रम ने इस गेंद को आहिस्ता से धकेल दिया। ऑफ साइड में रन बनाने का कोई मौका नहीं था। देर दना ना लाड़े खुशी। शाज़े भट्टी भी काशिफ भट्टी की तरह और उनके अलावा फौजदिल शाह की तरह उन्होंने इस ट्रैक पर बड़ा बांध के बॉलिंग की है, ज्यादा मार नहीं खाई इन्होंने। खुशी। और इस बार भी ये क्या हो गया? दोनों बैट्समैनों के दरमियान गलत फहमी, लेकिन नुकसान का कोई यहाँ पर अंदेशा नहीं है, क्योंकि फील्डर की जो थ्रो थी तो वो बर वक्त नहीं पहुंच सकी विकेट कीपर के पास। और ये आप देख सकते हैं, खुर्रम भी आगे निकले, नाफे भी आगे निकले, भागे, पलटे, और अगर खुर्रम इधर गिर जाते तो शायद मेरा ख्याल है मामला उलट हो सकता था। एक फ्रेम में बहुत कुछ हुआ। खैर, इसी दौरान 10 ओवर का खेल अपने अख्तिताम को पहुंचा। 84 उमर एसोसिएट 1 विकेट के नुकसान पर। और गालिबन ये आखिरी ओवर होगा खुशदिल शाह का। उमर अकमल फूली हुई सांस के साथ अपनी टीम की सांस बहाल करने में मसरूफ है, लेकिन ये इतना आसान होगा नहीं। अरशद इकबाल, काशिफ भट्टी, खुर्रम शहजाद, खुशदिल शाह, शाज़े भट्टी, अब तक इन बॉलर का इन्होंने इस्तेमाल किया है। सफर तवील है, अब भी कुछ 70 रन दरकार हैं इस मैच में कामयाबी के लिए। और अब मजीद आंखों देखा हाल सुनाने के लिए आपको कमेंट्री बॉक्स में ज्वाइन करेंगे जीशान अनीस शेख, जीशान खालिद और दानिश अनीस शेख। माजरत चाहूंगा दानिश अनीस शेख साहब। शुक्रिया बहुत बहुत याया हुसैनी। 10 ओवर से खत्म हो चुका है। 84 रन बना चुके हैं उमर एसोसिएट्स और ख्वाजा नाफे एक बार फिर अपने टैलेंट को दिखाते हुए। जितने भी यंगस्टर्स इस वक्त ये मैच देख रहे हैं, जो अच्छी क्रिकेट खेलना चाहते हैं, when you're chasing a total of 154, this is exactly how you're supposed to approach that target. You play freely in the beginning. You take advantage of the power play, Zishan. That's exactly what Omar Associates have done. If you talk about the innings of ख्वाजा नाफे, he has middled almost every delivery that he has faced so far. He has looked in complete control from the word go. Tonight he was opening the batting alongside Ahmad Alam, giving himself room, hitting it straight towards long on.
even when he is picking up those singles and twos, he has so much time to pick up the length early, and he can place the ball anywhere at his will. He's very quick on his feet as well, spots the ball early, and has no reluctance in playing aggressive shots as well. Serious talent, Eshaal. Very impressive. A big shot attempted. I don't think it's going to carry towards long on. It's gone between the fielder, a deep mid wicket and long on, and a couple taken by Khurram Manzoor. Especially when you have got a guy like Khurram Manzoor at the other end, you will have so much to learn from the experience that Khurram Manzoor has. Overall, this is turning out to be an excellent partnership. Exactly what Omar Associates needed. It was a good ball in the end. Charging down the crease there, Khurram Manzoor, but checking his shot. Khushdil Shah pulled his length back, denying him a big shot. Khushdil Shah, who has already picked up a wicket, the only wicket to fall of Ahmad Alam. Overall, it looks like a very good run chase from Omar Associates. He got out after scoring a half century last night. Khwaja Nafi, he'll be looking to finish the game tonight for his side. That's what big players do. Slightly shorter. Oh my goodness, where is that landing? That is going into the school on the right. This is exactly what we were talking about, Eshaal. He's really quick, reads the length so early, rocks back on the back foot and punches it way over deep mid wicket for a six. Serious talent this kid is. If you look at that length, it wasn't that short, but look at how quickly he rocked back onto the back foot. And tell you what, that ball travelled to Journey as if he was waiting for that length. Absolutely murdered that ball out of his side, and that's a no-look shot in the end. He wasn't even bothered where the ball was going because he knew it was landing outside the ground. बिल्कुल आप बात कर रहे थे ईशान के ख्वाजा नाफी आज कोशिश करेंगे ऑल द वे जाने की और मैच खत्म करने की। पिछला मैच जो उन्होंने खेला था साइड लाइन से मैं इनसे यही बात कर रहा था कि अपने लिए जो आपने बेंचमार्क रखना है उसको हर मैच के साथ ऊपर से ऊपर करते जाना है। When you score a 50, aim for 60. When you score 60, aim for 80. When you score 80, look to finish the match. अपने लिए कैद ना करें अपनी क्वालिटी को और अपनी स्किल को। The only competition for Khwaja Nafi so far is he himself. He needs to come out better of what he did in the previous game, and so far he's doing exactly that. Just 6 runs away of what would be his back-to-back half century, and that has come in good time as well. Just 26 deliveries he has faced. It's a sign of a good player. It's controlled aggression, but he has been dominant as well. Already 10 runs off the over. 1 ball still to go. Easy. This time he was looking to punch that out the back foot. Going straight towards that fielder at extra cover. A dot ball to end the over with. Khushdil Shah is done for tonight. A wicket and 29 runs. So his name after 11. It's 94 for 1. एक और बहुत इम्प्रेसिव क्वालिटी ख्वाजा नाफी की है कि पेसर्स के खिलाफ भी उतने ही सॉलिड नजर आते हैं जितने स्पिनर्स के खिलाफ नजर आते हैं। वरना हम देखते हैं खासतौर पे रिसेंट टाइम्स में पाकिस्तानी ओपनर्स आए हैं वो प्रीडोमिनेटली पेसर्स को ज़्यादा अच्छा खेलते हैं विद द एक्सेप्शन ऑफ फखर जमान हु प्लेज स्पिन इक्वली वेल, बट शायद पेसर्स के खिलाफ थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं बिकॉज ऑफ हिज टेक्निक। ख्वाजा नाफी हाउएवर इज अ 360 degree player. Yeah, as an opener you need to play fast bowler well as the spinners. And tonight when we looked at him, the way he was charging Arshad Iqbal, I mean Arshad Iqbal is a serious talent himself, and Arshad Iqbal has played so much cricket for Peshawar Zalmi as well in domestic circuit and PSL, and the way he was looking so comfortable and confident against him as well as against Khurram Shahzad, I mean he has a very very bright future ahead of him. बिल्कुल PSL 8 में अरशद इकबाल ही थे जिन्होंने कराची किंग्स से खेलते हुए बड़ा इम्प्रेस किया था और इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी बहुत तंग किया था। यू वर स्विंगिंग द बॉल बोथ वेज और कोई भी उनको कंफर्टेबली खेल नहीं पा रहा था, बट ख्वाजा नाफी इज प्लेइंग हिम लाइक इट्स चाइल्ड्स प्ले। Khwaja Nafi has played so much cricket already. I think he's going to be really unlucky if he cannot make it into any of the franchises in HBL PSL.
Of course, I'll go one step ahead. I see him playing for Pakistan in the next couple of years, for sure. एक तासुर जो पाकिस्तान में इस वक्त एग्जिस्ट करता है कि आपको किसी भी एक यंगस्टर को एक्सपीरियंस देने की जरूरत है. आई गेट दैट, आई अंडरस्टैंड दैट कि आप एक मरहला तय करके पाकिस्तान टीम तक आते हैं, आप डोमेस्टिक लेवल में अपनी एसोसिएशन से खेलते हैं, वहाँ परफॉर्म करते हैं, फिर पाकिस्तान के लिए आपका नाम आता है. बट इफ दैट वाज ट्रू, वी नेवर वुड हैव सीन सचिन तेंदुलकर प्ले एट द एज ऑफ 16. You know, we've seen so many youngsters come forward and become greats. Why not Pakistani batsmen as well? We just need to back them, Zishan. We just need to give them the confidence that they need. Yeah, sometimes you need to recognize the talent. I still remember even legendary Wasim Akram didn't play many first-class games before he was introduced by Imran Khan into the international circuit, and same can be done to Khwaja Nafi as well. Even if you talk about Shadab Khan, he had 1 or 2 very good seasons in PSL for Islamabad United, and then straight away he was inducted into the team, and we all know how a wonderful all-rounder Shadab Khan is. One of the top all-rounders if we consider his batting skills, his bowling effort, and the way he feels in the outfield. When it comes to new talent, we just need to keep an open mind. We just need to allow them to make that transition. We just need to give them the opportunities, which is exactly why Pakistan Shaheens need to tour more often. We need to send our under-23, under-19 squads for foreign tours so that they can make that transition easier for themselves. On-field umpire Ade Haider still having a word with Omar Akmal, the captain of Eshaal Associates. I don't think they are happy with the condition of the ball. और आले हैदर को भी अच्छी तरह पता है कि ये बॉल का मसला नहीं, ये ड्यू का मसला है, which is why they're having this discussion. Omar Akmal is a very cheeky customer. सारे पैंतरे आजमाएंगे बॉल चेंज कराने के लिए. I think he's buying some time for his team just to break the concentration of the two batters out there. That can be applauded as well. Once again, this is something that comes with experience. Omar has been part of all the situations we can comprehend. Meanwhile, both these batters got a good breather. If you talk about the match summary, Eshaal Associates, they won the toss. They batted first, could only score 153 for the loss of 9 wickets. At one stage, it looked like they were going to go well past 170 runs, but that mini collapsed because of that particular over from Arshad Wazir where he picked up 2 wickets, especially that one of Khushdil Shah. Just held those things back for Eshaal Associates, and in reply, Omar Associates have been putting up a top show in this run chase. यहाँ उमर एसोसिएट्स की जितनी तारीफ की जाए वो कम है. ज़ीशान बहुत ज़बरदस्त टैलेंट स्पॉट करते हैं, उसको मौका देते हैं, पहले अपने क्लब से खिलाते हैं, उसको ट्रांजिशन देते हैं, पीएसएल की टीम्स में शामिल करते हैं. साइम अयूब को भी उन्होंने मौका दिया था. पिछले साल साइम अयूब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा नहीं पाए थे, लोगों ने बहुत क्रिटिसाइज किया था. We've got to give youngsters some room to breathe. We've got to give them the opportunity to settle down and express themselves like we know they can. Umar Ahmed still at it. I think Umar Akmal wants to do seri here on this ground. He doesn't want to go home that early. Now both the umpires are involved with that discussion. It would have made sense if Umar Akmal himself would have been a bowler. He doesn't have to bowl. But he's the captain of the team and he wants his bowlers to get a new ball which they can use to turn and to grip better. शाहज़ेब भट्टी ने अभी तक 2 ओवर्स कराए हैं और 13 रन दिए हैं, कोई विकेट हासिल नहीं किए, but he's been pretty good considering how Nafi and Khurram have been playing. Yeah, I still have 2 overs remaining. Shahzeb Bhatti, yes, still looking to break this partnership. Finally, we are all set for this over to start, and Shahzeb Bhatti is going to continue with that same ball. I think Umar Akmal lost the case here. Well, the umpire is having the last say. खुर्रम मंजूर का क्रीज पर खड़ा रहना नाफे के साथ बहुत जरूरी है. जब तक खुर्रम मंजूर खड़े रहेंगे, नाफे को भी साथ खिलाते रहेंगे. He's one of those players who not only plays himself but अपने साथ वाले बंदे को भी बहुत अच्छी तरह से खिलाते हैं.
जी हाँ, काफी अच्छी बैटिंग की आज खुर्रम मंजूर ने भी, काफी अच्छा साथ निभाया है नाफे के साथ। आजा। इस दफा आराम से लेग साइड पे खेला है, डीप मिड विकेट फील्डर मौजूद, एक और सिंगल लेने में कामयाब होंगे खुर्रम मंजूर। Let's face it, this is what the situation calls for. 59 needed of 53 balls. Sidelines में मौजूद हैं फैजान लखानी। किसके साथ मौजूद है ये वही आपको बताएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया दानिश। जिस तरह कराची की रवायत रमजान क्रिकेट है, वैसे ही एक और रवायत कराची की है, और वो ये है कि यहाँ के मैदानों से पाकिस्तान को बड़े बड़े विकेट कीपर्स मिले। ऐसा ही एक नाम मेरे साथ मौजूद है, सलीम यूसुफ। कैच हो सकता था, लेकिन सलीम भाई आपसे बात करेंगे। रमजान क्रिकेट का मेला लगा हुआ है, कैसा लग रहा है ये सारी रौनक के बहाल होते हुए? कोविड के बाद यहाँ भी मैचेस हो रहे हैं, रमजान टूर्नामेंट का आगाज हुआ, कितना लुक फॉरवर्ड करें यहाँ? और ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है इनके लिए कि ये आके क्या कहते हैं यहाँ मैचेस खेलते हैं और खेलने के बाद अपने आप को साबित करते हैं, और सब लोग देख रहे होते हैं इसमें। हमारा PSL भी चल रहा होता है और इतना बड़ा टूर्नामेंट हो गया है, यहाँ से लड़कों को पिक करते हैं, तो मैं समझता हूँ बहुत खुशाइन बात है। और ये जियो का और इनकी पूरी टीम को मुबारक, बड़ा अच्छा उन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया है मैच। मोइन खान जो हमेशा इस तरह के टूर्नामेंट कराते हैं, सिर्फ कोविड की वजह से नहीं हुआ था, और ये बेस्ट टूर्नामेंट्स है और इसमें पूरे पाकिस्तान से प्लेयर्स आते हैं खेलने के लिए, और मैं समझता हूँ ये लड़कों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपके दौर में रमजान में कैसी सरगर्मियां हुआ करती थी क्रिकेट की? क्योंकि तारीख तो कराची की रही है ये रमजान क्रिकेट, थोड़ा अपने दौर के बारे में बताएं। देखें, हमारे यहाँ ये जो T20 अभी जो इतनी फेम हुई है, ये पहले नाजाबाद में हुआ करती थी T20, और मैं खुद वहाँ हम खेलते थे नाजाबाद में। एक शालीमार का वहाँ पे ग्राउंड था, वहाँ पर ये T20 मैचेस होते थे रमजान में सिर्फ, और इतना क्राउड होता था कि आप सफर नहीं कर सकते, और इतना एंजॉयमेंट होता था, और 7 विकेट के ऊपर होता था, इसी तरह छक्के चौके लगते थे और बहुत एंजॉय करते थे हम। तो वहाँ से जो T20 है ये नाजाबाद से मैं बड़ी हमें खुशी है कि ये पाकिस्तान से शुरू हुआ है और पूरी दुनिया में हो रहा है। कितना अहम है यंगस्टर्स के लिए, जैसे यहाँ ख्वाजा नाफे खेल रहे हैं, दीगर टीमों में और भी प्लेयर्स है, कि यहाँ पर परफॉर्म करें, क्योंकि मैचेस ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं, तो जो भी लोग टैलेंट स्काउट कर रहे हैं वो उनको यहाँ से पिक कर, तो इन यंगस्टर्स के लिए कितना अहम है ये टूर्नामेंट? देखिए, मैंने जैसे आपको कहा कि हमें तो फर्स्ट क्लास के पता नहीं 30-30, 20-20 मैच खेल रहे थे, हमें कोई टीवी नहीं होता था। वहाँ एक दूसरे के कोई हम सोचते थे कोई टेस्ट प्लेयर आके हमें देख ले, या कोई बड़ा ऐसा प्लेयर हमें देखे और आके जाके बात करे। अब तो टीवी चैनल्स हैं सारे, और जियो सारा ब्रॉडकास्ट करता है इतने सारे मैचेस को। इन यंगस्टर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं ये, और ये इन अपॉर्चुनिटीज से इसको फ़ायदा उठाना चाहिए, ताकि इनको पूरी दुनिया देख रही होती है। सारे जो क्या कहते हैं हमारे जो PSL के जितनी भी फ्रेंचाइज हैं वो देख रहे होते हैं, तो इनके लिए आसानी कि इनको जल्दी पिक कर लिया जाता है। PSL में भी जिस तरह आपने जिक्र किया कि सीनियर प्लेयर्स के साथ तो मौका होता ही है वहाँ पे कि सीखें, यहाँ भी इन यंगस्टर्स के साथ बहुत सारी टीमों में तजुर्बाकार प्लेयर्स थे, तो ये भी कितना अच्छा मौका है इनके पास सीखने के लिए। जाहिर बात है कि अब अपने सीनियर प्लेयर से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं। जिस तरह हम कोशिश करते थे कि पहले जो बड़ी टीमें होती थी, हमारे जो डिपार्टमेंट्स होते थे, उसके अंदर हम अगर 14-15 प्लेयर होते थे तो हमें ड्रेसिंग रूम से सीखने को मिलता था कि किस तरह कपड़े पहन रहे हैं, किस तरह खेल रहे हैं, किस तरह बातें कर रहे हैं, किस तरह खा रहे हैं। तो ये एक लर्निंग प्रोसेस है और ये यंगस्टर्स के लिए बड़े फायदेमंद है। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम भाई। और जब आप बात करते हैं यहाँ एक और छक्का का इजाफा हुआ है, और ये थे सलीम यूसुफ, पाकिस्तान के साबिक विकेट कीपर बैटर, जो बता रहे थे कि ये टूर्नामेंट कितना फायदेमंद हो सकता है यंगस्टर्स के लिए। बैक टू कॉन्फ बॉक्स। A massive six by Khwaja Mohammad Nafi. That's a six in any ground in the world. Wow. That ball almost landed in the parking lot and he did not even bother looking at it. In fact, he is looking at the pitch. There is nothing wrong with that pitch, Nafik, especially the way you are batting here. What a way to bring up his half century. 5 maximums and a boundary, and that has come in a very good time as well. Kashif Bhatti getting some treatment of his own medicine. What's impressive, what's more impressive, Zishan, is he's doing it against Kashif Bhatti, who's seen it all. He's played tests for Pakistan. He has countless wickets in domestic as well. And he is playing him like he's nothing. Yeah, Kashif Bhatti bowled his first 3 overs on the other end. He was a little expensive. Omar Akmal thought a change of end might bring favor in his luck, but the way Khwaja Nafi is batting, he's absolutely showing no mercy towards any bowler. This time a top shot by Khurram Manzoor, and he's going to collect another boundary as well. All along the carpet, showing his experience, showing his class. Khurram Manzoor. That was a special shot from Khurram,
gave himself room, left the wicket and carved it between short cover and long off. Very, very well played there. This time open over, taking the aerial loot. He overran that, Shahzeb Bhatti, but he still managed to stop the ball in the end. Good effort, really good effort this from Shahzeb. He almost saved a certain boundary again. But yet again, this is turning out to be a very expensive over from Kashif Bhatti. 13 runs already off it. Hitting it flat, this time straight to Kashif. Shahzeb, in fact, towards long off. Another single taken. They need less than a run a ball now. Omar Associates. This pair needs to end the match. That's how he brought up his... Have a look at that shot. Back live. Carved away on the offside. Another single taken by Khwaja Nafi. He is so very quick on his feet. Khwaja Mohammad Nafi played some amazing shots using his speed, full flow of the bat, playing all around the wicket. He's really strong on the back foot as well. Charges with confidence and hits the ball so well. We're back live. It's all fireworks tonight from Khwaja Nafi. It's raining sixes here at DHS Sports Club Moin Khan Academy Cricket Ground. 113 for 1, just needing 41 more runs to win in the last 7 overs. I don't think they will take it down to the last over because of the way Khwaja Nafi is batting. Let's not forget, Zishan, ये वही पिच है जिसमें हमने इससे पहले जो पहला मैच देखा उसमें दोनों टीमों के बैट्समैन ने स्ट्रगल किया. They just could not get going. They could not play the shots as freely as they would have liked to. The bowlers were getting that grip from the pitch as well. They were getting so much turn. But Nafi is batting like it's batting paradise right now. Yes, such is the class of the batter, because he's up against some high-quality bowlers. Khurram Shehzad, Arshad Iqbal, Kashif Bhatti are very seriously talented bowlers. And you are right, they are batting on a similar track, but it's the mindset. He knows his game, he knows his strengths, and he's so far making full use of them. It's amazing what self-belief can do, Zishan. Can change situations. It allows batsmen to go against all odds and be exceptional. अभी भी 6 की चाहिए, अभी भी 6 की चाहिए, ठीक है, शाबाश. The crowd is definitely enjoying this magnificent batting show from Khurram Manzoor and Nafi. And Khurram Manzoor is doing the right thing as well. He's collecting boundaries and he's giving away singles to Nafi as well, so that the youngster can showcase his talent. There you see the crowd enjoying each and every moment out here at DHS Sports Club. This has been a lovely tournament. बिल्कुल यहाँ पर delivery boys भी अपनी deliveries complete करके आए हुए हैं, Zishan. Once again, he was looking so elegant, even while taking that single, Khwaja Nafi. I hope Nafi carries his bat. The way he's playing, ऐसा लग नहीं रहा कि उनके कोई इरादे हैं आउट होने के. खैर इरादा तो किसी बैट्समैन का नहीं होता. But he's looking so good. He's not facing any difficulties at all. I don't remember he getting beaten on any of the deliveries so far in this innings. Everything has come from the middle of his bat. And not only he has timed the ball well himself, he has been very agile in running between the wickets. It was him who asked Khurram Manzoor for that second run. Both of them saying sorry to each other. Come on, boys. Good stuff here. They see Khurram Manzoor wanted just a single, but there was a fumble there from Faik there at deep mid wicket, which allowed both these batters to come back for the second run. Again, slightly short, carved towards deep cover. Another single taken. Looks like a walk in the park now for Omar Associates, the way these two batters are batting. Without taking any extra risk, they are still managing to get at least 7 or 8 runs an over. Nafi doesn't really enjoy being bobbed down. I'd like to see him under pressure and see how he comes out of it, although there is none of it at the moment. Carving it past that fielder at deep cover. Some work to do. Another single taken.
He's going to keep the strike at the start of next over. After 14, it's 120 for 1. Asad Shafiq is padded up along with his helmet. I don't think he will be required, but I think he's going to be the next man in if a wicket goes down at this stage. One of the classiest batsmen in recent times, Ishan. I used to love watching him bat. Absolutely. Heaved away on the onside. A fielder is there at deep in wicket. That's probably the first big shot that he has attempted, which has not gone outside the boundary ropes. Talking about Asad Shafiq, he was class, especially in the longest format of the game. I still remember that innings that she played against Australia at Brisbane back in 2016. Pakistan were chasing down 490 runs in that game. It was a day-night test match. And the way Asad Shafiq batted, he scored a century, and Pakistan almost pulled off a spectacular victory. That too against Australia down under. Asad Shafiq has done that on quite a few occasions. Meanwhile, we have a star in the making, Khwaja Mohammad Nafi, looking so confident right now, and rightly so. He's batting on 58 of 37. And he has such a wonderful opportunity to learn from the likes of Asad Shafiq, Khurram Manzoor, Anwar Ali as well. Once again, another sharp single taken. His batting performance has been outstanding. His game awareness has been immaculate as well. Whenever he sees an opportunity of a single, he never backs himself away. Plus, he's so quick to spot the back balls. Spots them really early and punishes them right away. Coming down the track. Not connecting it as well as he would have liked. Khurram Manzoor, another single nevertheless. Khurram Manzoor also sets very high standards for himself. He always has scored countless runs in his domestic career. So many centuries, so many runs under his belt. He goes for a big one. That's flat, that is long, that is yet another maximum. What a show we are witnessing tonight from Khwaja Mohammad Nafi. I won't be surprised if he won't win the Man of the Match award yet again tonight. I think there is no other competitor, no one who is even close to him. You should have caught that, sir. I would have literally dived. Had there been a cash prize of a catch in the crowd, he would have definitely gone for that catch. Well, catching the ball itself would have been a prize for me. Once again, an expensive over comes to an end. 11 runs off it. After 15, it's 131 for 1, needing just 23 more runs to win in the last 5 overs now, Omar Associates. So Omar Associates now need just 23 runs of 30 balls. This should be a walk in the park, considering they still have 9 wickets remaining. And the way Khwaja Nafi and Khurram Manzoor are playing, they have no intentions of taking it till the last over. This will be over by the 18th over. Possibly. Should be. Both these batters are absolutely no mood of wasting any more time. अब आप बताएं जरा मुझे, रमजान टूर्नामेंट हो रहा है, अरशद इकबाल जो कि पीएसएल में इतनी शानदार बॉलिंग करते आए हैं, एक ही ओवर कराया है इस पूरे मैच में और उसमें भी 16 रन्स खाए हैं उन्होंने. That tells you the story how
special this batting performance has been from Khawaja Nafi. Helmets are back on. So are the Pacers. It was a good ball. There were definitely two sounds, but I think the bat made contact with the pitch when he was looking to drive that ball, and it wasn't even collected by the wicketkeeper, so it would never have counted. This is what we were talking about, Zishan. Instantly, Khurram Manzoor approaches Nafi. He knows he's batting really well, but still, that senior's role is absolutely crucial. Yeah, guiding Mohammad Nafi all the way along. Khurram Manzoor, a wonderful character, Khurram Manzoor. Sometimes I feel he was so unlucky not to have been given chances in Pakistan cricket team. Slightly shorter. Worked on his legs. Another single taken. He's also very good at giving respect to the senior pros. Yeah, if he can get a bad delivery, he'll put away for a boundary, but whenever it's a good ball, he's going to play it on its merit. Plus, Zishan, no matter how good you are, you always have something to learn. Now, Nafi needs to learn that his team is on the brink of a win. He needs to stay there and finish the match, not leave it to the next batsman. And for that, he needs to rotate the strike if he needs to. He possibly cannot go for a six or a boundary on every ball. Yeah, he's a good learner as well. Even if we talk about his performance in the last game, he got out after scoring a half century, and from there on, Omar associates were in a slight bit of bother, but it was Asad Shafiq who guided his team to. Tonight, he has learned from his mistake. He has not given it away after getting to his half century. He knows that he has an opportunity of staying not out till the end of this game, and that will be a huge boost in confidence in him when he'll come out to bat in the next game. The messenger coming in. I wonder what he's come to say to both these batsmen. Menu for Sairi, maybe? Yeah, out nahi hona hai. I'm sure both the batsmen said, duh, we know that already. I think they are asking whether should we ask the next batter to pair up, or are you guys going to finish it yourself? Again, duh, we are going to finish it ourselves. आजम खान की भी जितनी तारीफ की जाए कम है. उमर एसोसिएट्स की एवोल्यूशन में इनका बड़ा किरदार है और प्लेयर्स को ग्रूम करने में इनका बड़ा किरदार रहा है. Yeah, Azam Bhai has been a very active manager. He spots the talent, he gives them chances, and you will always see him around Omar Associates. उमर एसोसिएट्स की बात की जाए तो यहाँ पर टैलेंट के लिए दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, चाहे आपका जो भी बैकग्राउंड हो, चाहे आपने क्रिकेट खेली हो या ना खेली हो. I've seen people who had no experience whatsoever play for them. Slightly shorter again. He was a little uncomfortable in pulling that. Khurram Manzoor might have hit his gloves and then his body. Still got that single. Yeah, the services that Omar Associates are rendering for the young cricketers, I think they have a very good chance. In fact, they still are not only a cricketing club, but an institution for all the youngsters who want to come and learn and showcase their skill. And who knows, they might end up playing for Pakistan one day. There are countless names even in this tournament. Arshad Wazir, Usman Tariq, Khwaja Mohammad Nafi. There are so many of them. A pickup shot, leading edge, third man takes it. Not a good end to the wonderful knock from Khwaja Nafi. He was being congratulated from Arshad Iqbal as well. This has been a top knock from the young right-handed batter. He was looking to use his wrist on the leg side. Just got a leading edge. And unluckily, there was the fielder at third man right, standing at the boundary ropes. And he has to walk back now to the pavilion. But a wonderful knock nevertheless. Khwaja Nafi scoring 67 of 43. Another brilliant knock from the youngster. Omar Associates are now 133 for 2.
once again, we're absolutely thrilled about the way Khwaja Mohammad Nafi played, but he did look a little dejected that he could not finish the game. That's exactly the kind of dedication that we're looking for. Never be happy with the way you perform. Yeah, he was so committed. He wanted to stay there till the end, but now he has been dismissed and now he has been replaced by the skipper Asad Shafiq. That's how he got dismissed. He was looking to play that flick shot on the leg side. Might have played it a little too early. Got a leading edge and a very good catch taken by third man. Still, they are in a very dominant position, Omar Associates. I still remember the cover drive that Asad Shafiq hit in the previous match. His team was under pressure and he got a 4 out of it. What a classy shot that was. Yeah, one thing is for sure, you can expect textbook shots from Asad Shafiq. He might improvise when needed, but on the other hand, he will play proper cricketing strokes. Wrapped on the patch. Big appeal this from Arshad Iqbal, but definitely the ball was angling down the leg side. That was bordering desperation for Arshad Iqbal because it was clearly going down leg, as you just pointed out. But you were talking about Asad Shafiq. There you can see the angle was taking it down leg. Asad can be really explosive if he wants to, if he is in the intention of going for it. He can really play his shots. Yeah, he's the kind of a player who will play according to the situation. If a situation demands him to stay out there, he'll take some time. If it's required for him to go after the bowling, then he'll charge against the bowlers as well. Just one ball remaining now in this over from Arshad Iqbal. Driven on the offside, finds a gap. Khurram Manzoor, and he's going to find the boundary ropes. The ball is just slowing down. Is it going to make it? It has stopped. Are you serious? I wouldn't want to be Khurram Manzoor there. I mean, that should have been a 4. It should have. It deserved to be a boundary. A couple nevertheless. It was wonderfully driven. A diving effort from the fielder at short extra cover. Look at that fielder at mid-off. He knew the ball is going to go and touch the boundary ropes. He didn't even bother moving. And somehow, I think some external forces must have slowed the ball down. Hats off to the guy who was standing at short cover. He was a man on a mission. He was running like somebody is chasing him. Chased the ball down eventually. Just allowed Khurram Manzoor to take a couple. 136 for 2 after 16. खान का मैदान इस वक्त रात के 2:30 बजे तमाशाइयों के शोर से गूंज रहा है. It's absolutely amazing. जी हाँ दानिश, और जिस तरह यहाँ पे ये लोग एंजॉय कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये लोग अभी कुछ देर बाद भी जाने वाले हैं, because they are watching 2 international cricketing stars playing in front of their eyes. यहाँ पे कुछ लोग थरपारकर से आए हुए हैं. Such is the craze for this wonderful game of cricket. Previously, they have been watching these stars on their TV screens. This tournament, this particular tournament, the Maple Leaf HD Putty 8th Corporate T20 tournament, is giving the spectators the opportunity to come here, fill in the stands, watch their stars playing in front of them. Azam Khan looking like a happy chappy. They all want him. Khurram Manzoor coming down the track, wide of long on, one bounce into the fence. He's taking off from where Khwaja Nafi left. Look at how beautifully Khurram Manzoor is finding gaps here. Yeah, this sort of innings was long due on Khurram Manzoor. He couldn't score runs in the previous game. Tonight he took some time. He had the confidence because Khwaja Nafi was going berserk at the other end. So once again coming down to track, and he has missed it. मुझे लगता है ये क्राउड की बात सुनी है खुर्रम मंजूर ने, और क्राउड चिल्ला रहा था आजम खान, और अब लगता है फाइनली आजम खान को क्रीज पे आने का मौका मिलेगा. बट अब सिर्फ 13 रन दरकार है उमर एसोसिएट्स को 21 बॉलों पे.
देखना होगा कि आजम खान आकर कितनी जल्दी ये मैच खत्म करते हैं, बिकॉज ये उनका होम ग्राउंड है. हर लिहाज से बचपन से उन्होंने यहाँ पर क्रिकेट खेली है. जी हाँ दानिश, क्राउड को वो मिल ही गया जिसके लिए वो इतनी देर से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. खुर्रम मंजूर एक बेहतरीन इनिंग्स खेलने के बाद पवेलियन लौटे. 45 रन बनाए आज, 141 पे 3. I mean, how can you deny this love? How can you say no to this love, Zishan? So much love for Azam Khan here. Tells you about the love that he's gathered in the past 2 or 3 years. Azam Khan is a superstar, especially in this format of the game. They just need 2 maximums, maybe 3. And the crowd is absolutely going to love it if they're going to come out of the bat from Azam Khan. Coming into bat at number 5 tonight. अच्छा, मतलब 2 नहीं 3 मैक्सिमम चाहिए आपको. Nafia has spoiled you, Zishan. But if anyone can do it, Azam Khan can. That's how Khurram Manzeer got himself out. Coming down to track, he was a little disappointed in the way he lost his wicket. Now the crowd have the opportunity to witness what they are here for. Azam Khan. Up till now we have been watching Azam Khan on our TV screens. Now they have the opportunity to watch him back live in front of their eyes. Defensive shot, first up. He goes at it, takes a single. One thing is for sure, with Azam Khan, there is never a dull moment. Even a single coming from the bat of Azam Khan is like an event for these spectators. और आजम खान ने पिछले 1-2 साल में ग्लोबल सर्किट पे भी अपने आप को मनवाया है. दुनिया भर की लीग्स में उन्होंने शानदार परफॉर्मेंसेस दी हैं. Scored a couple of centuries as well. Yeah, he had a brilliant Caribbean Premier League and then he scored a century in Bangladesh Premier League, and we all know how well he played for Islamabad United in the recent edition of HBL PSL. Effortless drive yet again from Asad Shafiq. No matter how difficult the conditions is, no matter which opposition he's playing against, he looks in complete control. Such a pleasure watching him bat. They are not going to go home unless and until they witness a 6 coming from the bat of Azam Khan. They will have to wait till the next over maybe. Another single. A successful over comes to an end from Waheed. After 17, it's 144 for 3. ये भी इंतहाई मैच्योरिटी की बात है ज़ीशान के. The crowd is chanting your name and you know you can finish the match in a couple of balls, yet if you don't have the right ball, you go for a single. You don't try to force the shot. Sign of a quality player. Yeah, team's requirement comes first. Yes, he has the ability of hitting the first ball out of the park, but he is answering the situation of the game. The crowd wants him to hit almost every ball out of the ground. That was a duh moment for me. But he's back on strike. Arshad Iqbal is going to continue with his third over. He will be looking to use the space from the fast bowler. The bit off is inside. Long gone is back at the boundary ropes. Wrapped to the pads and the finger goes up. They were waiting for some carnage, but Azam Khan will be walking back to the pavilion without hitting any maximum tonight, Danish. Arshad Iqbal showing his experience there. Bowled right at the stumps. The ball slightly coming in. It kept low as well. Was there a double sound there? Well, Azam didn't look happy by the way he got out, but it looked pretty straightforward. Just 2 runs for him tonight. It's 144 for 4. I think he wasn't happy because the ball kept low. He signaled to Asad Shafiq as well that it stayed low. But he missed the line of the ball there. Kudos to Arshad Iqbal. Yeah, holding on to his nerves, Arshad Iqbal. A good comeback after an expensive first over from Arshad. Got that wicket of Khajanaf in the previous one and now has dismissed Azam Khan. One superstar departs.
Another walks in. Anwar Ali. A promotion in the batting order for the all-rounder. It's a question for people watching in India and other European countries. How do you like Pakistani talent so far? Well, there is no comparison to the amount of talent we have. That's how Azam Khan lost his wicket. Yes, it might have stayed a little low. He was looking to play across the line and he got into an awkward position because his front foot never came out. Ali Haider, on the other hand, having no hesitation in raising his finger. Good ball. Good Yorker. Arshad Iqbal now bringing in his experience into play. Should he have been introduced much more earlier, Arshad Iqbal? I guess so. I mean, a bowler of Arshad Iqbal's caliber ends up bowling just 3 overs. That would be sad. It seems like he would end up bowling just 3 because Omar Associates need 10 runs. They've sent Anwar Ali because they have no intentions of taking it till the last over. Because during the middle stages of the innings, Nafe and Khurram Manzoor were playing spinners so well. Omar Akmal should have introduced a spacer at that moment, just to mix things up. Coming on the offside. The throw is at the bowler's end, but Anwar Ali makes it. That stands true when you have a bowler of Arshad Iqbal's caliber. I mean, someone you can believe in, someone you can trust to get a wicket, especially when there are a couple of players set on the crease. Yeah, he's a partnership breaker, that is for sure. Yes, you can have an expensive over early on, but you will always have to back up your experienced bowlers. He was a little expensive, yes, in his first over, but that was during the batting power play when just 2 fielders were outside. Could have been a different story altogether. Once again, playing it softly. Another sharp single taken. Look at how fit he is as a Shafiq. Is he into the mid-20s? Well, he ran like a teenager. Although he ran right in the middle of the crease. Yeah, the umpire might have a word with him. He's so sharp. He has taken an excellent catch already in this tournament, and tonight we saw him saving few runs for his side. He usually fields at mid-off or mid-on. Good ball. Really good ball. What an exceptional over this is turning out to be for Arshad Iqbal. He's given away just 2 runs and taken a wicket. It's good stuff. That's what we were mentioning. Had he been brought back a little earlier into the attack, who knows, he might have broken the partnership between Khurram Manzoor and Khwaja Nafe, and a new batter in would have been much more difficult. But tonight, with them needing just 8 more runs to win, it's not going to be a difficult chase for Omar Associates from here on. Then again, Zishan, ifs and buts just complicate life. Too late to talk about that now. Although I'm sure Omar Akmal would have learnt a lesson for the matches to come. Yeah, both these sides still have a match remaining in the group stages. Looks like Omar Associates are going to go at the top of the points table. Another beautiful delivery. Arshad Iqbal cannot believe his luck. That missed the outside edge, that missed the off stump, and Anwar Ali should consider himself extremely lucky here. Just short of good length, that nagging line and length which always troubles batsmen. Anwar Ali is definitely better than that. We've seen him play some extraordinary innings, but Arshad Iqbal just too good for him in that moment. 146 for 4 after 18. Can this stretch this match till the last over? It's ending in this one. Let's just hope Khurram Shahzad doesn't bowl a no ball here. He has a tendency of doing that. Yes, he is very talented, but we've known him for bowling no balls. Even Khurram Shahzad has just bowled 1 over so far. Good ball, really good ball. It's getting a little exciting now.
Although they just need 2 boundaries, but all of a sudden, the hopes, just a glimmer of hope you can say, is back for Eshaal Associates. Sohail Khan getting ready, although Omar Associates would be hoping that they wouldn't need him. Well, they definitely will if Khurram Shahzad can pick up a wicket here. Driven on the offside. Well, the sound of the bat clearly suggested that there might be few more runs than a single. He middled it to perfection, but straight to the fielder on extra cover. Right then, it's time for fireworks. Anwar Ali. He usually likes pace, Anwar Ali, although he got beaten outside the off stump in the previous over. Just couldn't connect it. Another single towards long on. He's doing the right thing. Khurram Shahzad sticking to the basics, keeping as straight as possible, not giving any room to these right-handers. Omar Associates just 1 shot away from a win here. It will be their 2nd consecutive win in this tournament. They had a close call in their first match against AZ Real Estate and Builders. This, however, is definitely a better performance overall. Yeah, they pulled things back in the first innings where they only allowed the opposition to score 154 runs, and in run chase we saw how well Khwaja Nafi and Khurram Manzoor batted. But the job is not done yet. Getting back to that first innings, you'd remember, in fact you were there in the comm box, how beautifully Asad Shafiq used Sohail Khan. Shot on the offside over extra cover, is that it? That's going to be a boundary. This is exactly what we expect from a class player like Asad Shafiq. Another wonderful boundary for a right-hander. Got the nod of approval from Nadeem Umar as well, just clearing his front foot and hitting it above short cover's head. Just going wide of that extra cover fielder. Proper cricketing stroke this. Although he prefers hitting it all along the carpet, but he saw the opportunity with mid-off and extra cover inside the inner ring, so he took the aerial route. He's a wonderful captain as well, a very good student of the game, Asad Shafiq. A big heave on the leg side. There is a fielder down there at deep square leg. It's only going to be a single, and the scores are now level. Asad Shafiq has had it. He wants to finish this and go home and have a good seri. So do we. Definitely, Danish. Although we don't prepare it, still. So the final ball of the 19th over coming up. Is it going to be the final ball of the game as well? All the fielders inside the inner ring. Smashed it. Straight as an arrow. Anwar Ali hitting the winning runs, and fittingly, Omar Associates have managed to win this quite comprehensively in the end. A wonderful run chase from Omar Associates, their 2nd consecutive victory in this tournament. A slower one. Anwar Ali was waiting for it. He knew the mid-on and mid-off fielders were inside the inner ring, so he got a boundary. And with that, he also finished the game for his side. Spare a thought for Eshaal Associates. They fought hard, but they faced the tornado in the face of Khwaja Mohammad Nafi. Exciting cricket here at Moin Khan Cricket Academy, DHA Sports Club. An overall good performance by Omar Associates, first with the ball and then with the bat. Good partnership between Khwaja Mohammad Nafi and Khurram Manzoor allowed them to achieve a comfortable position in the match. Eventually, Asad Shafiq using his maturity to finish it off. Yeah, we have talked about Khwaja Mohammad Nafi and Khurram Manzoor, but the credit should be given to Ahmad Alam as well, the way he came out and opened the batting. He was the one who collected those 14 or 16 runs in that opening over.
from Arshad Iqbal, and from there on they got that momentum. They just never looked back. Omar Akmal tried all his bowling options. That's how Ahmad Alam started off his innings. That was a wonderful shot over fine leg. That too in the very first over. That was how Mohammad Nafi started his innings. I'm a big fan of this no-look shot. Ahmad Alam lost his wicket. Khwaja Mohammad Nafi, although continued. Khurram Manzoor also played a vital role in that partnership. He struck maximum, he struck boundaries. Khwaja Mohammad Nafi, there was no stopping him tonight. That was the show. That's how, unfortunately, he lost his wicket. Went for another maximum, but was holed out in the deep. Khurram Manzoor, after collecting a boundary, lost his wicket. Azam Khan was unfortunate. Couldn't score many runs tonight. Asad Shafiq getting a beautiful boundary on the offside, and Anwar Ali finishing the things off with a straighter hit down the ground. So, very good effort from Umar Associates. They were clinical with the bowling performance, and in the run chase, Ahmad Alam scoring quick fire 23. Khwaja Mohammad Nafi yet again being the hero for Umar Associates. Khurram Manzoor missing out on his half century, still provided a very good stability in that partnership. Asad Shafiq scoring 9. Azam Khan missed out. Anwar Ali providing the finishing touch. As far as the bowlers are concerned, it was a struggle because of Nafi's brilliance. Arshad Iqbal managed 2 wickets, just ended up with 3 overs. Khushrul Shah managed to take 1 wicket, whereas Waheed managed a wicket as well, giving away 19 runs in his 2 overs as well. Eventually, Omar Associates showed up and won the match by 6 wickets. Bismillah Khan did play a good innings of 30 for Eshaal Associates. Omar Akmal couldn't go too far, scored 20. A solid show of strength by Omar Associates here. We'll take a short commercial break, and after that we'll be right back with the post-match presentation ceremony of game number 6 in Maple Leaf HD Putty 8 Corporate T20 Cup, powered by Parkview City. First boundary of the innings. Knocked him over. Fine, and that is going to go past the boundary ropes. Another pickup shot over. Has that been taken? Anwar Ali takes it. Knocked him over. Down towards long on. What a catch. गेंद बाउंड्री के बाहर, बहुत ही शानदार स्ट्रोक. गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए. गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए. क्या खूब खेले हैं इस बार, और इस बार आउट होंगे, और ये 4 रन होंगे. What a show we are witnessing tonight from Khwaja Mohammad Nafi. मेरा ये प्रिंसिपल स्टांस है, आज भी है, कल भी था और हमेशा रहेगा, कि इस प्राइड को जो डैमेज करे उसको दोबारा ये प्राइड नहीं मिलनी चाहिए. दैट्स इट, एंड ऑफ स्टोरी. प्रेशर कितना था आपके ऊपर जब ये रिपोर्ट मंजर आम पर आई और आपने रिपोर्ट देखी होगी, तो आप पे फोन तो आए होंगे आपके पास कि ना करें जनरल साहब? कभी नहीं. जनरल साहब कभी नहीं. आपको कोई पसंदीदा प्लेयर था? कभी नहीं. यार बड़ा अफसोस हुआ. आप कभी नहीं. हमने पास्ट में कोई एग्जाम्पल सेट की ही नहीं है. जो मैं बात हमेशा से करता रहा हूँ कि हमने पास्ट में
पुराने वक्त की बात कर रहा हूँ, हमने कोई एग्जाम्पल ही सेट नहीं की, तो ये चीजें होती रहेंगी। दिल कितनी बार टूटा अब तो मैंने शायद वो काउंट करना मुश्किल होगा, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। उम्मीद तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन जब अनाउंस हुआ और नाम नहीं है था, तो फिर तो जाहिर बात है हर बंदा डिसअपॉइंट होता है, चाहे मैं हो कोई भी हो। जब वो उम्मीद रखता है और वो पूरा नहीं होता, तो सेम वही सिचुएशन मेरी भी। जो अल्फाज से अदा हो जाए मगर आंखों से बयां ना हो, तो वो फिर प्यार तो ना हुआ। इतना करीब आ जाओ कि तुम्हारी सांसें मेरी सांसों से बन जाएं, कोई दूरी ना रहे। हमारा और उनका खून जुदा था, जुदा है, जुदा रहेगा। इमामुल हक ने 378 वनडे मैचेस की 350 इनिंग्स में 39.52 की औसत से 11,739 रन बनाए, जिसमें 83 50 और 10 सेंचुरीज बनाने का एजाज शामिल है। जियो सुपर पे रमजान क्रिकेट का भरपूर मजा, भरपूर एनर्जी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डीएचए स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान क्रिकेट एकेडमी से एक बार फिर आपको प्रेजेंटेशन पार्टी के साथ खुशामदीद कहेंगे। मैपल लीफ एचडी पुटी 8th कॉर्पोरेट T20 टूर्नामेंट पावर्ड बाय पार्क व्यू सिटी। आज टूर्नामेंट का 6वां मैच खेला गया। उमर एसोसिएट वर्सेस इशाल एसोसिएट और डीएचए स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान क्रिकेट एकेडमी में इस मैच में कामयाबी हासिल की है। यकतरफा मुकाबले के बाद भरपूर तालियों में उमर एसोसिएट ने। ऑन माई लेफ्ट प्रेजेंटेशन पार्टी मिस्टर सलीम यूसुफ, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, मिस्टर तहसीन जावेद, फेमस सिंगर एंड कैप्टन ऑफ द सेलिब्रिटी वाइट्स टीम, मिस्टर नदीम उमर, चेयरमैन कोयटा ग्लैडिएटर एंड चेयरमैन उमर ग्रुप। उमर एसोसिएट की टीम ने आज इस मैच में जो है वो कामयाबी हासिल की है। आज इस मैच में इशाल स्पोर्ट्स की टीम ने जो है पहले बैटिंग करते हुए 154 रन स्कोर किए थे और उमर एसोसिएट की टीम ने 6 विकेट से ये मैच जीता है 157 for 4 और ये मैच जीत गई है उमर एसोसिएट की टीम। फर्स्ट वी वुड लाइक टू थैंक डीएचए स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान क्रिकेट एकेडमी मैनेजमेंट, sponsors DHA Karachi and all over security department who have extended their support for putting this spectacular cricket event. आज के मैच में कामयाबी हासिल की है उमर एसोसिएट की टीम ने, लेकिन मैं पहले गुजारिश करना चाहूंगा इशाल एसोसिएट के कैप्टन उमर अकमल साहब से कि वो आए और कुछ ख्यालात का इजहार करें। उमर, कम रन्स थे 154 आप लोगों ने पहले बैटिंग करते हुए किए, आप खुश दिल से आपकी टीम में थे, तो आपको लगता है कि कम स्कोर था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छा टोटल था। मैं क्रेडिट दूसरी टीम के बैट्समैनों को देता हूं कि जिस तरह उन्होंने बैटिंग की है
उन्होंने पूरा कंट्रोल अपने पास रखा है। हमने भी काफ़ी अच्छा फाइट बैक करने की कोशिश की है, लेकिन एंड ऑफ द डे मैच बहुत अच्छा हुआ। तो उमर, जिस अंदाज में उमर एसोसिएट ने इनिंग का आगाज किया, अम्माद ने और उनके साथ ख्वाजा नाफे ने, और उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वन साइडेड कर दिया उन्होंने मैच। नहीं, वन साइड तो नहीं किया। आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने पूरा कंट्रोल अपने पास रखा हुआ था, जब चाहे वो बाउंड्री लगा रहे थे, जब चाहे वो सिंगल कर रहे थे। तो ये एक अच्छे बैट्समैन की निशानी होती है और होपफुली इंशाल्लाह ताला इस टूर्नामेंट से कोयटा की टीम को, PSL को इस तरह के बैट्समैन अच्छे मिलेंगे। तो क्या सीख कर जा रहे हैं उमर इस मैच से? क्योंकि एक आम तासुर यही था कि आप और उमर एसूस की टीम जो है वो फाइनल खेलेगी। नहीं, जाहिर सी बात है, अभी एक और मैच पड़ा हुआ है, कुछ भी हो सकता है। कोशिश करेंगे बाउंस बैक करने की और इंशाल्लाह अगर अगला मैच अच्छे रन रेट से जीतेंगे तो हम भी इंशाल्लाह क्वालिफाई। हार्ड लक, बैटल लक नेक्स्ट टाइम। उमर अकमल, कप्तान इशाल स्पोर्ट्स। और अब मैं गुजारिश करना चाहूंगा उमर एसोसिएट के कैप्टन, पाकिस्तान के टेस्ट बैट्समैन असद शफीक से कि आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। असद शफीक। जी असद, बहुत बहुत मुबारक हो। और सारी चीजें आपके ख्याल में ठीक हुई। 154 उमर कह रहे थे कि इतना बुरा स्कोर नहीं था, लेकिन आप लोगों ने जिस तरह खेला, कुछ आपने मौका ही नहीं दिया उनको। नहीं, बिल्कुल उमर सही कह रहा था कि जिस तरह से पहले मैचों में पिच चली है तो यहाँ पे स्पिन हो रहा था, लेकिन ड्यू फैक्टर आज बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से बॉलर्स स्ट्रगल कर रहे थे बाद में बॉलिंग करने के लिए। लेकिन हेड्स ऑफ टू ख्वाजा नाफे और अम्माद आलम और फिर खुर्रम मंजूर, तीनों ने जिस तरह बैटिंग की है, वन साइड कर दिया मैच। तो क्या कहेंगे आप उमर एसोसिएट के हवाले से? नदीम उमर, आजम खान यहाँ पर मौजूद हैं, एक से एक हीरा तराश कर लेकर आते हैं। जोरी का काम होता है हीरों को तराशना, और आज जिस तरह ख्वाजा को हमने बैटिंग करते हुए देखा है, ख्वाजा नाफे को, मेरा मतलब है कि आप मौजूद हैं टीम में, आजम मौजूद हैं, अनवर अली मौजूद हैं, खुर्रम मंजूर मौजूद हैं, लेकिन आज सारे बॉक्स को ख्वाजा नाफे ने टिक किया। नहीं, ऑब्वियसली एक्सेप्शनल बैटिंग की, और सिर्फ आज नहीं, हमारे साथ जो है पिछले 2 सालों से हमारी टीम में खेल रहा है और बड़ी अच्छी अच्छी इनिंग्स खेली हैं, लेकिन डे बाय डे अपने आप को बहुत इंप्रूव कर रहा है। और आई होप कि फ्यूचर में भी ऐसे ही अपने आप को इम्प्रूव करता रहे। और जिस तरह आपने उमर एसोसिएट्स की बात की, तो आज से नहीं, पिछले 12-15 साल से मैं इस टीम के साथ हूँ और पाकिस्तान को काफ़ी प्लेयर्स दिए हैं इस उमर एसोसिएशन ने, क्योंकि हम सारे शुरू में जो है रमज़ान ही खेलते थे क्रिकेट, पर आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को ग्रूम किया और क्रिकेट जाता है आजम भाई को, नदीम भाई को, कि जिस तरह से उन्होंने फैसिलिटीज़ दी हुई हैं टीम को, तो हम भी कोशिश करते हैं कि हार्ड वर्क करें और जो वो कॉन्फिडेंस हमारे ऊपर शो करते हैं उससे पूरा उतरें। थैंक यू वेरी मच असद शफीक, और भरपूर तालियां नदीम उमर साहब के लिए, जिनकी बात कर रहे थे इस वक्त कैप्टन उमर एसोसिएट असद शफीक साहब। मिस्टर सलीम यूसुफ, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, विल प्रेजेंट द प्लेयर ऑफ द मैच मेमेंटो ऑफ, और ये प्लेयर ऑफ द मैच आज के हैं उमर एसोसिएट के अरशद वजीर। टुक 3 विकेट और शानदार कारकर्दगी का उन्होंने मुजाहरा किया। और नदीम उमर साहब यहां पर मौजूद हों और कैश अवार्ड ना हो, ये कैसे हो सकता है? मिस्टर नदीम उमर, चेयरमैन उमर ग्रुप, विल प्रेजेंट द प्लेयर ऑफ द मैच कैश अवार्ड ऑफ ₹15,000 अरशद वजीर। सबसे पहले तो अरशद वजीर साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, 3 for 21। और अरशद इकबाल भी खेल रहे थे आप ऑपोजिशन में, और उसके अलावा जो है भट्टी भी खेल रहे थे, लेकिन आप जो है वो सारे इनामात ले गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। हाँ बिल्कुल, सारे बड़े प्लेयर थे, हमारा साथ भी थे, असद भाई थे, अनवर अली भाई थे, सोहेल भाई थे। बस कप्तान ने सिर्फ ये बोला कि विकेट टू बॉल कर दो, इंशाल्लाह अच्छे परफॉर्म आ। कौन सी विकेट ज्यादा अच्छी लगी 3 में से? हमारा तो खुशदिल शाह का विकेट अच्छी लगी थी, वैसे कि हमारा जान पहचानने वाला है, मुझे पता था ये बाउंसर मारता है, लेकिन हमने कोशिश की बस इनसे बाउंसर पे आउट करने। थोड़ा सा माइक ऊपर कर लीजिएगा। ठीक है। तो क्या खास बात थी, बोलकर आए थे खुशदिल शाह को? हाँ, हम खुशदिल शाह का बहुत खुश। अच्छा, चले, बहुत शुक्रिया आपका अरशद वजीर, थैंक यू वेरी मच। और मिस्टर तहसीन जावेद, कैप्टन सेलिब्रिटी वाइट्स, विल प्रेजेंट अ क्लब सोवेनियर टू मिस्टर सलीम यूसुफ, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर। और उसके अलावा नदीम उमर साहब, चेयरमैन उमर ग्रुप, आप सोवेनियर देंगे।
नहीं तहसीन जावेद साहब देंगे नदीम भाई को। बहुत शुक्रिया आपका नदीम उमर साहब, बहुत शुक्रिया आपका सलीम यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका तहसीन जावेद साहब। तो यहाँ पर डीएचए स्पोर्ट्स क्लब क्रिकेट ग्राउंड में 8वें कॉर्पोरेट T20 टूर्नामेंट में आज 2 मैच मुनक्किद हुए और कल इस टूर्नामेंट का पहला मैच शाम 7:30 पर मोमिन सीट का मुकाबला होगा नेहा एसोसिएट के साथ और दूसरा मैच रात 11 बजे तरीन अकेडमी का मुकाबला है AO हॉस्पिटल के साथ। तो सैयद याया हुसैनी स्पोर्ट्स जियो सुपर की पूरी टीम के साथ आपसे इजाजत चाहेगा। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। First boundary of the innings. Knocked him over. Fine, and that is going to go past the boundary ropes. Another pickup shot. Oh, has that been taken? Anwar Ali takes it. Knocked him over. Down towards long on. What a catch. गेंद बाउंड्री के बाहर, बहुत ही शानदार स्ट्रोक। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। क्या खूब खेले हैं इस बार और इस बार आउट होंगे और ये 4 रन होंगे। What a show we are witnessing tonight from Khwaja Mohammad Nafi. Love Network T20 series presented by Bank Al-Falah. Afghanistan up against Pakistan, match number 2 of this series from Sharjah Cricket Stadium. Afghanistan, of course, 1-0 up in this 3-match series. It is the second game of Be Love Network T20 series presented by Bank Al-Falah. Here at the toss, I've got both the captains and the match referee. Rashid Khan is captaining Afghanistan, Shadab Khan captaining Pakistan, and Mr. Hameem Talwar, former first-class cricketer from Afghanistan. I believe Rashid got the coin. He'll slip it. Heads is the call. It is head? Okay. You sure? You're not confused? Okay. Okay, Shadab, you have won the toss. What is your choice? Bismillah Rahman Rahim. Amir bhai, again, we wanted to bat first. Thank you very much. Eshaal and Pakistan side lining up with one change. Nawaz, the all-rounder, the spin bowling all-rounder coming in for Fahim Ashraf, who is more of a seam bowling all-rounder. One change for Afghanistan as well. Usman Ghani comes in place of Gulbuddin Naib. Saeem Ayub, just his second match. He's got all the shots in the book and is a serious talent in the making. And Ahmed Harris, just the early stages of his career, again a very young man at 21, average and strike rate was a school report card would say needs improvement. And we'll start again with the left arm. We saw a swing 2 nights ago as well, Fazal Faruqi. And it wasn't scant. Plenty of swing for both the fast bowlers. And that's what brought a lot of problems for the Pakistani batters. Start seam up, a little bit of movement back in. Yeah, that's his own, isn't it? When you talk about Saeem Ayub, he likes to drive the ball. He commits himself on the front foot way early. Edge, oh, that is brilliant. Absolutely stunning catch.
diving away to his left. Gurbaz pouches it just above the ground. An early strike, another one. This time for Fazlullah Farooqi. Just hung his bat away from the body, and what a catch. Talk about athleticism. Talk about dexterity. He didn't score any run. It's 0-1 Pakistan. Well, Abdullah Shafiq out very early. Oh, tight, really tight. I think that's out. I think he's hit. Has he hit his pad or has he hit the ball? Maybe it's an inside edge. He's gone upstairs straight away. Pitching in line, impact in line, wickets hitting. Paktin, stay with your original decision. You are on screen now. Took his time, made the right call, and it was spot on. Abdullah Shafiq at his 4 in a row. Pick up 4 ducks in a row. None for 2. Well, an early entry for Tayyab Tahir as well. On a hat-trick. Oh, wow, that is spot on. There's an appeal. Has it hit the boot? They think it's hit the boot. I mean, no, surely not. I think so as well. And for Pakistan's sake, it wasn't the case. There you go. Forget about that. He knows only one way to bat. He ended up clearing mid-off quite comfortably. I know there was a moment of interest, but it's actually cleared him by a long way. Ahmed Nabi, the man inside the circle at mid-off. Boundary riders are at third and deep backward square for a Marzai, and that's into the gap as well. Lovely bit of timing from Mohammad Harris. He goes back-to-back boundaries. Feast your eyes with that stroke. Perfect stroke from Mohammad Harris. Oh, what a shot that was. Cleared everything. Top sound of the bat. You knew where it's going. This has just got a little bit more bounce in the surface. Coming onto the bat slightly nicer. Still not overly short. But the pace of the ball allowed Mohammad Harris just to swing through the line. The wickets tonight. That's in the gap again. Lovely timing. My word. Tayyab this time should pick up 3 and get himself off the mark. An over that cost 18. It's 18 for 2. Edge this time and gone. There's another one. And this time it is Naveen ul Haq who picks up the wicket. That was an airy-fairy stroke from Harris once again. He once again forgot to get to the pitch of the ball. His foot was outside the leg stump. He was looking to hit the ball, which was pitched outside the off stump through extra cover. Had to pay the price. Had to pay the price. Brisk start from Harris. Ended his contribution 15. It's 20 for 3. Imad Wasim is the new batter. Oh, it's lovely. What a start that is from Imad. It was a gorgeous stroke. The first delivery he faced, yes, it was a half volley. He's off the mark in style, Imad Wasim. So somebody has to give him that information to be able to perform better. That was a brilliant hit from Imad Wasim. Oh, I like the way he's batting, showing a lot of confidence. Yeah, it's nice. Waited for one just to drift in on his legs. I like it.
That's probably not a bad idea. Just push the ball around, make sure where you stand with similar wickets down 3 by over number 15, and then you'll unleash Azam Khan and all the others to come Shadab and try to get maximum in the last 5. Picked up in the air, but there's open spaces down to the deep mid wicket on the boundary. Bit of a misfield. That's good running. That's very good running. The awareness to realise that, first of all, it's quite a big boundary out there. There's an opportunity to come back, but to watch the field and realise that there's a misfield and then come back for 2. I'm with you on that, and the key is run the first one quickly, get in good positions, game awareness, slight fumble, and you are on your way for the second. And the wide throw helps you. That's the fumble. It's a fraction of a second you take your eyes off the ball. Full toss, catch it is a call, but that should sail over. That was one juicy full toss, and Imad won't miss that. Brings up the 50 for Pakistan. A batsman of the caliber of Imad is not going to miss out on this. Balls of catch it, and he's got more than enough to clear that long on boundary comfortably. It can be tricky at times, you know, the full toss, if it's not at the right height, if it's not low enough. Oh, he hasn't got hold of it. That's skied in the air. Will they get to it? 2 men under it. And it's been taken. He's claimed it. Omar Zai. That's a good catch. He ran in from deep square leg. It was a top edge. It took some catching. Kept his eyes on the ball and held on to it. Have a look at this. Well, it's an outstanding catch. You'll feel for him because he's gone just a little too far down, going up. That's why he's got the distance going up as opposed to the distance going forward. It's an outstanding catch because he's running into his left. Probably would have been easier for Najibullah to take it, but he's effected the catch. He goes for 13. Pakistan is 60 for 4. मेरा ये प्रिंसिपल स्टांस है, आज भी है, कल भी था और हमेशा रहेगा कि इस प्राइड को जो डैमेज करे उसको दोबारा ये प्राइड नहीं मिलनी चाहिए. दैट्स इट, एंड ऑफ स्टोरी. प्रेशर कितना था आपके ऊपर जब ये रिपोर्ट मंजर आम पर आई और आपने रिपोर्ट देखी होगी तो आप पे फोन तो आए होंगे आपके पास कि ना करें जनरल साहब? कभी नहीं. जनरल साहब कभी नहीं. आपको कोई पसंदीदा प्लेयर था? कभी नहीं. यार बड़ा अफसोस हुआ. आप कभी नहीं. हमने पास्ट में कोई एग्जाम्पल सेट की ही नहीं है. जो मैं बात हमेशा से करता रहा हूँ कि हमने पास्ट में पुराने वक्त की बात कर रहा हूँ, हमने कोई एग्जाम्पल ही सेट नहीं की, तो ये चीजें होती रहेंगी. दिल कितनी बार टूटा अब तो मैंने शायद वो काउंट करना मुश्किल होगा, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग. उम्मीद तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन जब अनाउंस हुआ और नाम नहीं है था तो फिर तो जाहिर बात है हर बंदा डिसअपॉइंट होता है, चाहे मैं हो कोई भी हो. जब वो उम्मीद रखता है और वो पूरा नहीं होता तो सेम वही सिचुएशन मेरी भी. जियो सुपर पे रमजान क्रिकेट का भरपूर मजा, भरपूर एनर्जी के साथ भरपूर क्रिकेट, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट के सुपरस्टार्स सरफराज अहमद, खुशदिल शाह, शान मसूद, असद शफीक, हैदर अली, आजम खान, अनवर अली, उमर अकमल, फहीम अशरफ,
Sign you. Maple Leaf SD Patti 8 Corporate T20 Cup. Powered by Parkview City. 7 से 15 अप्रैल DH स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान अकेडमी से बराह रास्त। सेफ जियो सुपर पे जीत के जियो। Azam Khan, the 24-year-old, 113 matches, best of 109 not out. He's out there in the middle. Lots of work still to be done for Pakistan. Huge shot given. Once again failed to pick up that wrong gun from Rashid Khan. Azam Khan on that occasion, and he's not bothered to refer it. He's walking back. No point in taking that. Only one review that's left for Pakistan. Take another look at this. It's the wrong one. It's pitched and it's turned back into the right-hander. Got him plumb in front of middle and would have crashed onto middle and leg. The umpire had no hesitation whatsoever in upholding that appeal from Rashid Khan. The captain has struck, and it's an important wicket. Azam Khan gone for one. Pakistan 63 for 5. Well, the captain's walking out into the middle, and he's walking out when the team is again in dire straits. Shadab Khan is all that Pakistan will get if they continue with the current run rate. Well, they're trying to change things around here. Shadab with that nice little push drive through the covers. That'll end the over. 12 gone, 68 for 5. They pick up early wickets, create the pressure on the batting side, and from there, spinners ride. That's good running from Imad Wasim. Running hard. And gets too easily. Big throw towards the striker's end, and that's why the keeper, Gurbaz, is very disappointed. Again, just trying to milk him for the single and the odd two. Again, another hard run. Was it directed? Was it? No, I think on the bounce, the keeper whips the bails off. Now they've referred it to the TV umpire. How close was that? I satisfy. I'm going to make my decision on the big screen. Yeah, timely dive saved Shadab Khan. He was well in. Clever, very clever indeed, and it's gone all the way. 50 for Imad, only the second Pakistan player to do so against Afghanistan. He now sits alongside Babar Azam. Yeah, this is not a good delivery. We talked earlier on the over about 4 boundary riders on the leg side. This is short, it's given him width. Yes, he has also given himself some room going leg side to be able to access the offside. Great strike. 17 balls left in the innings. Oh, that's just come off the thick inside edge. You can see the disappointment for Shadab because he knew that he could have got that away. Oh, can't quite get that one right. Has it hit the bat or not? They're keen. They're desperately keen. There was a little noise, but what was it? No, there definitely was a noise. It doesn't look like the ball was close to anything else, really, other than probably a brush on the glove. It's a flat line. When ball passes to the bat, it's a flat line. No bat involved. Bismillah, you stay with your original decision, not out. Some width, and there should be 2. The glove will come back. Going to the keeper's end, good throw, but comfortable enough. 100 comes up. 100 comes up
14 balls left in the innings. Maybe just give him access to that onside field. That will be 4. Thick outside edge away to a vacant third. 2 overs to go, 106 for 5. Inside edge, and that will race away for 4. So a couple of streaky-ish boundaries in the last few deliveries. It's worked out well this time. It's got the thick bottom edge, gone past the keeper. What matters now is the results, and it's a good one to start this penultimate over. Gotta start trying to pick the bowler's brain a little bit here, Ahmad. Right, last one, it is Naveen. Can't find the gap. That's the one that you would love to have seen him just go a little bit to offside and power into the leg side. Well, that would have been in the ideal position to be able to just pick that up. Get one, it might get one. Squeezed off the edge. Down to the boundary at third for 4. Just enough on that outside edge to go wide of the field at short third, and enough momentum to roll into the third man boundary. Karab Khan was looking for the ball to go elsewhere on the field. He won't mind the boundary that's come with it. Karim Jannah, desperate dive. This is out on a full toss. They'll go again. They should go again too, Shadab. Oh dear. Decides against it in the end. He's decided to go for the run out because he's the man who's in, but almost gave them an opportunity to get another run. Oh, no ball called. Now, extra delivery. Bismillah Jan Shinrari, the umpire. Pace off or a wide Yorker. Tried the wide Yorker, didn't get it right, and he got hurt downtown on the free hit. Very easy, just because the ball's a full toss, to look to heave it to the leg side, but he stayed straight. This is the one bounce. Yeah. He picked it as well and found the gap leg side, but will only get 1, come back for 2. There's the pace off into the surface. Shadab wants a new bat for the last ball. And back to the Yorker, and then back to the full and wide. Yeah, he did. And Shadab played it straight to the man who'd just been put back there. I'll try and pinch 2. He should be run out. No, good dive. Very good dive. We will check this, but I think it might be 2, and we could be at 131 for Pakistan. Yeah, freeze it when the bails come up. Yeah, I'm satisfied. I'm going to make my decision on the big screen. Umpire Akbar Ali is convinced that's out, and rightly so. So it'll be exactly 130 for 6 in the end. And I just think that Pakistan will feel like it's a score with a very good bowling performance. They can defend, Tino. They've got to be good in the field as well. Talked about that short boundary that was there. This is how it went. There were 3 early wickets that fell once again today, but Imad Wasim was the man who did the job in the middle part of the innings. 64 and 57 balls. Shadab Khan out the last ball of the innings, supported him well with a well-made 32 and 25. They end up 130 for 6. And in the end, it was the standout performance of Imad Wasim, along with Shadab, that partnership taking the score from 63 through to the 130. Really good quality bowling performance again from Afghanistan. A little expensive for Omar tonight, and Mujib 2 overs for 19, but apart from that, the rest of the bowlers were superb.
Remembering that Afghanistan are 1-0 up in this series, and to go 2-0 up, they will need 131 runs off their 20 overs at 6.55 per over. Back after a short break with Afghanistan's chase. जियो सुपर पे रमजान क्रिकेट का भरपूर मजा, भरपूर एनर्जी के साथ भरपूर क्रिकेट, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट के सुपरस्टार्स सरफराज अहमद, खुशदिल शाह, शान मसूद, असद शफीक, हैदर अली, आजम खान, अनवर अली, उमर अकमल, फहीम अशरफ, साइम अयूब, मेपल लीफ एचडी पट्टी 8 कॉर्पोरेट T20 कप पावर्ड बाय पार्क व्यू सिटी 7 से 15 अप्रैल DH स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान अकेडमी से बराह रास्त। सेफ जियो सुपर पे जीत के जियो। Gurbaz, who opens, the wicket-keeper batter. He's out there, and he'll make sure he tries and gets those runs going on, especially in that power play. His partner, Usman Ghani, today, and he will also look to get some shots going when the field is not spread out. Naseem Shah will take the new ball. Sam Abdul has joined me. Sam, Pakistan 63 for 5. You'd say you'd take 130 at the end of 20, and with the bowling that they have, you'll probably try and get a few wickets going in the power play. So there are a chance if they pick up some early ones. Tricky, this power play from the first game, and then today Pakistan losing 3. It's the first ball, it's a bit of shape moving away from that right hander. The new ball will test the batters out there, especially in the first 3 overs. The first runs for Afghanistan. We'll probably push in for 2.
Yeah, that's Samanullah Gurbaz down the wicket, creates that lane, and that's a massive six. That's gone on the roof. Probably slightly squarer. This has gone a little straighter. That is such a clean strike, 98 metres. New balls, please. Again, he's dragged that from outside off stump. Didn't really get hold of it, but it's a huge vacant zone on the onside, so he'll fancy his chances. First over, gets them 12. A slower ball. So, reaching for it, end up dragging it. Doing the right thing inside the power play, no problem with that. Deceived in the flight of the slower ball, but still went through with the shot. Another single. It's not a bad idea. Money off the mark. More runs here, at least a couple. Oh, how did he lose that, Harris? He's a good fielder. He dived just over it. Yeah, swing and a miss, wasn't it? It was an air shot almost. He might have just got the fingertips on it, Mohammad Harris, but turned quite nicely. Timed relatively well in the end, but Harris gets there and just gets the fingertips on it. Can't haul it back. Well, before, when there's space on offer, there are certain things you've got to deal with as a fielding side. Part of the reason that I think Mangani has been brought into the side is because of his ability to play the quicker bowlers. Just waited on that pace, almost knocked it on its head a little bit, and through the gap to a backward point. Oh, he's hit it. He's hit it too well. Just didn't get in the first go, Shadab. For a moment, Gurbaz must have had his heart in his mouth. He hit it too well. That's good cricket. Really good cricket. And I think their cricket will only improve the more time they spend here and play in conditions like Abu Dhabi, and don't always come just to Sharjah because it suits the... Oh, he's gone through. In two minds for a moment, yes. He took the pace off and that has worked. Brilliant. Nice way to get your first wicket in international cricket. It was a slower ball. It was beautifully bowled. Stayed a little low. But it was really nice from Zaman. Gone from 143 kilometres per hour down to 123 with that pace off. Inside edge, back onto the pad, then onto the stumps. Deceiving Ghani, all ends up. Really well bowled. So Usman Ghani goes for 7. Afghanistan lose their first, 30 for 1. Those are the numbers for Ibrahim. Opened day before yesterday, today at number 3. Chance again, non-striker. And again a miss. Toying with him. Shadab has missed 2 now. He's grabbed a handful of fresh air on both occasions. Just half opportunities, just looking up. Just looked up a little bit too early. That's a nice looking shot. It's a good outfield. You get value for runs here. Nawaz after that does well to keep the ball in play. You come back for 3. Oh, that's wide. Oh, Azam Khan has done well to get a hand on it, but not enough. So that's going to run away. Wides will be signalled. Runs given here,
Was there some bat on it? Yes, there was a sound. And albeit, you've got to say Azam Khan did well to try and get glove to that. It's 4 down the leg side. And when it's bowled at that pace, close to 144 kilometers per hour from Zaman. Looking for a tight single. Yeah, this could be close now. I think he ran for it the moment he played that, did Ibrahim Zadran, therefore making his ground. They're asking the question for the second and they will get it comfortably. Gurbaaz played it wide of long off, and that's the reason why he had the time to come back for the second. Hit down the ground, and that's the safest zone, and a welcome boundary that takes Afghanistan past 50. Such a good shot, because it's not premeditated. He's seen a bit of extra flight, and he's seen that the length is up to him. So he can afford just to play the bunt back over the bowler's head. Hasn't tried to hit it too hard at all. He knows that the boundary behind the bowler is short. Another quick single this time. A better throw might have had Ibrahim Zadran in trouble, but it wasn't to be. 8 gone, 55 for 1. Orangia, they look for 2. In fact, they'll come back and complete that as well, Ibrahim Zadran. Again, the importance of a set batter. They'll come back for 2 here. And a better throw might have had Gurbaaz in trouble. And that's why the captain's looking disappointed. Well, once again, great example of running between the wickets. The call was for 2 straight away. He's got there and he's come back. He's put the dive in, Ramanullah Gurbaaz. I think even with that better throw, he still would have made his ground. It's called for 2 again. Sharaf Khan has gone himself. This is extremely good running by the Afghanistan pair. Takes us to the halfway stage in the chase. It's 66 for 1. मेरा ये प्रिंसिपल स्टांस है, आज भी है, कल भी था और हमेशा रहेगा कि इस प्राइड को जो डैमेज करे उसको दोबारा ये प्राइड नहीं मिलनी चाहिए. दैट्स इट, एंड ऑफ स्टोरी. प्रेशर कितना था आपके ऊपर जब ये रिपोर्ट मंजर आम पर आई और आपने रिपोर्ट देखी होगी, तो आप पे फोन तो आए होंगे आपके पास कि ना करें जनरल साहब? कभी नहीं. जनरल साहब कभी नहीं. आपको कोई पसंदीदा प्लेयर था? कभी नहीं. यार बड़ा अफसोस हुआ. आप कभी नहीं. हमने पास्ट में कोई एग्जाम्पल सेट की ही नहीं है. जो मैं बात हमेशा से करता रहा हूँ कि हमने पास्ट में पुराने वक्त की बात कर रहा हूँ, हमने कोई एग्जाम्पल ही सेट नहीं की, तो ये चीजें होती रहेंगी. दिल कितनी बार टूटा अब तो मैंने शायद वो काउंट करना मुश्किल होगा, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग. उम्मीद तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन जब अनाउंस हुआ और नाम नहीं था तो फिर तो जाहिर बात है हर बंदा डिसअपॉइंट होता है, चाहे मैं हो कोई भी हो. जब वो उम्मीद रखता है और वो पूरा नहीं होता तो सेम वही सिचुएशन मेरी भी.
This time, Lara has found the gap. And that short boundary on the side. That's drifted away from Lara, and then it's drifted away from Fielder as well at about 100 miles an hour. That's nicely played. That's Brian Lara's half century. And I can tell you he'll be thinking that is only the beginning. He won't be getting too excited about this. He wants a really big score, I'm sure about that. What a shot. Just straight onto the middle stump. He's whipped it away beautifully. All the way on the carpet. Catch it! Well, flight on that occasion. He's cleared Stuart McGill. That's the 7th boundary for Brian Lara. What a glorious shot. Sweet timing. He just used the pace of the bowler. There's no one at mid-wicket. Stuart McGill's got the chase. And there it is. Century to Brian Lara. Another one at the Adelaide Oval. This is his 4th one in Australia. Glorious placement. When he starts placing the ball like this, you know that he's in very good form. Oh, and off the edge and down to third man for 4. Well, when things are going for you, get away with those. Always had a go at that one as well. That's what happens. If you start to bowl at the odd bouncer, get them just a little bit worried. Every now and again, Lara will cut loose like that, and well, that time he got hold of it. That's beaten the field, and it'll go down to the long boundary, and it'll go for 4 as well. This is a beautiful outfield all the way, yes. There's that one-handed sweep, and this time, take that straight into the fence for 4. It's gone square. Oh, what a shot. Oh, big cracking sweep shot. Justin Langer had 15 metres to move, and it was over the ropes. That could well be 4. Nicely deflected. Lots of work down there for the fine leg, who won't get there. Well, he did get there, Justin Langer, but by the time he got there, he was over the rope. Oh, smash. This one's well in front of point, and 4 more. He smacks that away. That's the Brian Lara of old. Goes for it. It's beaten the man at square leg. That will do it. 8 scores of 200 or more for Brian Lara. Waves to a, well, sort of fairly well-packed Adelaide Oval. That was a wonderful double hundred. The umpire feels there's some bat involved in that as well. The replays will tell us the story, but he feels no. Will Pakistan go upstairs? I think they've got to. I think they've got to. Go on, Shadab, make the signal. No. Was their bat? Straight off the glove. There you go. If they thought it was pad, they had to go up, but no. I think Azam Khan, yeah, and Shadab, spot on. Well done, well done. Yeah, again, a quick single. Again, very well done by the 2 batters out there.
Nawaz finishes off with his spell, none for 16 in his 4, and Afghanistan 79 for 1. He's asking for it, he's got it. If there's no bat, but Gurbaz has gone up straight away. Let's find out. It's a spikes game when the ball hit to the gloves. I'm satisfied. Pak team, I recommend you to change your decision. Partnership has come up between the two. Pushing hard for the second. Men out quite in the deep. That's really good running. You just get a feeling Pakistan needs to attack a little more with their field placement. They can't afford to give away those 2s and 1s. Well, this is good batting. Just nudged the ball into the gap. In the air. A valiant effort from Shadab Khan. In vain. Just landed short of the captain. Great effort. One, it's taken the leading edge. And look at this for effort. 100%. Oh, he already changed his stance. This could be a chance of a run out. It is. Gurbaz will have to go back to the dugout. And he cuts a very unhappy figure because he was sent back by the non-striker. We have review Something for had to give. run out. Can you give me the Boundaries were hard best to side come by. angle? The batter had to take few risks. Was attempting a reverse sweep. Went straight to Naseem Shah. Bullseye. He shot outside the crease. Direct hit. His contribution 44 from 49 at 86 for 2. Short ball. He's picked it up early. And will get 4. Ibrahim Zadran carrying on despite Gurbaz falling. They were desperate to find a boundary. And it was a long hop. Waited for a little a bit, the batter, and decided. Catch it! That's in the air. It falls in no man's land. Plenty of time for the batters to cross over for 2 runs. End of the over, 95 for 2 after 16. In the air, but has he got the distance? No, he hasn't. In fact, thankfully, he didn't connect that very well with Ibrahim Zadran. Otherwise, it might have straight away gone down to long on. Yeah, the requirement is 9.13 from here on. Change of angle. Slow delivery. Worked away on the onside, behind square for a couple of runs. Well, the strike rate doesn't matter that you have to go belligerent. I think he's missed out on a scoring opportunity here as Ibrahim Zadran. It was a short ball. Don't think he picked it the way he would have liked, but the single will bring up the 100 for Afghanistan. Edged and taken. Gleefully accepted by the wicket-keeper. And that will be the end of another set batter. Ibrahim Zadran will have to go. And what a scalp. What a scalp. He has removed the set batsman. Pakistan back in this game. Ibrahim Zadran contributed 38 from 40 deliveries. It's 1 or 2 for 3. Mohammad Nabi, he's the man who steps out into the middle now. Hit down the ground and hit cleanly enough for 4. Najibullah Zadran, along with Mohammad Nabi, this was the pair that did it for Afghanistan in the previous match. Can they do it again? Yeah, for the first time in this over. And it was very easy for the left-hander to hit the ball aerial into the gap, and with this boundary, pressure is off. Have a look at the cameraman.
Oh, he's taken a blow. Oh dear. Biju. The side of the head. But more runs here. More runs here. Has he stopped the boundary? Zaman Khan, I think, did very well to stop a 4 there. We'll have them way ahead in this game. Fast ball. Creamed away for 6. Could this be the defining moment in this run chase? The reason why he was slouching in his stance, he was wanting that length. And went with the stroke, and it has disappeared. And now, when this hit, scales are tipped. I was looking for the Yorker, Naseem Shah, but in the end, Nabi will come back for an easy 2. They're making this a big over. They've already got 10 off it. 2 balls remaining. Intelligently played. Change of angle. In the slot. And it's gone the distance. What a cracking hit by Najibullah Zadran. And a 17-run over from Naseem Shah comes to an end. It's 126 for 3 after 19. Yeah, Naseem Shah missed his line and length on that occasion. But Najib didn't. Pounce on the opportunity. And that was a hefty blow. Mohammad Nabi did it a couple of days ago with Najibullah Zadran for Afghanistan, winning that first ever T20 I for Afghanistan versus Pakistan. Can he now make it 2 out of 2? Can lightning strike twice at the same place? He's got the ability, Zaman Khan. He's so used to bowling those last overs, and with some success. Short, and Nabi was waiting for it, but he'll only get a single here. So now 4 required of 4. Again, change of pace, but they've run a by. Clever thinking by Mohammad Nabi. He was the one running towards the danger end. And, well, appreciation from Najibullah for that. This is intelligent cricket. Get a new batter in on the last ball then, if you take a wicket here. Be realistic. Don't ask for the moon. Remembers Najibullah and Mohammad Nabi took Afghanistan home for a win a couple of days ago. Oh, it's going to drop short. And once more, it's gone for 4. Afghanistan win the match. And also take an unassailable lead in the series. For the first time in a T20 international series, Afghanistan have beaten Pakistan and clinched a series. What a moment. What a moment for Afghanistan's cricket. Oh, look at the joy in the Sharjah Stadium. And despair as far as the Pakistani fans are concerned. They just can't believe what happened here. Yes, you've got 2 contrasting pictures being painted across the stands here at the Sharjah Cricket Stadium. And a winning moment there. Sliced away towards third man. The ball was dipping on the fielder. Went for the catch. In the end, not managing to latch on. And look at the reaction of everyone in the Afghanistan dressing room. And then joy for them. Despair for Shadab Khan. Despair for Zaman as well. He thought he had a wicket there. He could have had a wicket there. You cannot be hard on Ehsanullah because the trajectory was low and he didn't have enough time to get underneath the flight of the ball. He did try his hardest, but in vain. But in the end, job well done by these 2 senior campaigners. Yeah, they did it a couple of days ago for Afghanistan, winning that match 2 days ago, and they've done it again. Mohammad Nabi with Najibullah
and Rashid Khan cannot conceal his joy. Then, of course, with 131 to chase down, Gurbaz and Usman Ghani opened the batting. And there was that big partnership worth 56 between Gurbaz and Ibrahim that just set the tone for this chase. The Pakistani bowlers did try their heart out. It was just that one wicket. That's the match summary for you. Pakistan, remember, batted first. Their captain and Shadab had won the toss, elected to bat first. Just managed to get to 130 thanks to that big partnership between Imad Wasim and Shadab. Because at one stage they were just 63 for 5 after 11 overs, but that final 9 overs and that partnership got them to 130. But in the end it wasn't enough. Afghanistan getting the winning runs with 7 wickets still in hand to clinch this match, and of course also take an unassailable 2-0 lead in the series. Now Mr. Muhammad Umar Khan will present the B Love Network, the Player of the Match cash award of Afghani 50,000 to Fazle Haq Farooqi. He bowled 4 overs, 1 maiden, 2 for 19 in a game where bowlers had a tough time. This new ball and that swing wins him that Player of the Match award. पाकिस्तान के खिलाफ 5 T20 और 5 वनडे मैचेस की सीरीज खेलने के लिए न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई। मेहमान टीम 13 अप्रैल को लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में पहला ट्रेनिंग सेशन करेगी। T20 सीरीज की ट्रॉफी की रूनुमाई भी उसी रोज होगी। पहला T20 मैच 14 अप्रैल को लाहौर में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ व्हाइट बॉल सीरीज की तैयारी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ट्रेनिंग कैंप का 4था रोज खिलाड़ियों ने इंटर स्क्वाड मैच खेला। टीम बादशाह की क़यादत बाबर आजम ने की। टीम स्टैलियंस की कप्तानी शादाब खान के सुपुर्द थी। दूसरी जानिब सीरीज के लिए बनाए गए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच एंड्रू प्यूटिक ने भी टीम को ज्वाइन कर लिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान रावलपिंडी और कराची में होने वाले मैचेस के टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त आज से शुरू होगी। रावलपिंडी में T20 मैचेस के टिकट की कम से कम कीमत 500 रुपए और वनडे मैच की 300 रुपए होगी। कराची में वनडे मैचेस के टिकट 250 से 1000 रुपए तक में दस्तयाब होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जारे मिजाज ओपनर फखर जमान की सालगिरह के मौके पर कौमी टीम के खिलाड़ियों के पैगामात। बाबर आजम, इमामुल हक, इफ्तिखार अहमद, नसीम शाह और मोहम्मद हारिस ने फखर जमान को सालगिरह पर मुबारकबाद दी और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। बांग्लादेश के दौरे के लिए तैयारी करने वाली पाकिस्तान अंडर-19 क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का कैंप में 2 रोजा प्रैक्टिस मैच। अली असफन अंडर-19 वाइट, साद बेग अंडर-19 ग्रीन्स की क़यादत कर रहे हैं। पहले दिन अंडर-19 वाइट ने बैटिंग की। ग्रीन्स की टीम आज बैटिंग करेगी। कराची में जारी 8वें T20 कॉर्पोरेट कप के 4थे रोज AZ रियल एस्टेट ने बैरिंगटन क्रिसेंट ग्रुप को मात दे दी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर पर बराह रास्त नश्र किए जा रहे हैं। बरतानिया के टेनिस स्टार एंडी मरे का मॉन्टी कार्लो मास्टर्स में सफर पहले ही राउंड में खत्म। उन्हें ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मिनॉय ने स्ट्रेट सेट में 6-1 और 6-3 से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान रावलपिंडी और कराची में होने वाले मैचेस के टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त आज से शुरू होगी। रावलपिंडी में T20 मैचेस के टिकट्स की कम से कम कीमत 500 रुपए और वनडे मैच की 300 रुपए होगी। कराची में वनडे मैचेस के टिकट्स 250 से 1000 रुपए तक में दस्तयाब होंगे। Bowling
पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 2 T20 और वनडे मैचेस रावलपिंडी में खेले जाएंगे, जबकि आखिरी तीनों वनडे मैचेस की मेजबानी कराची करेगा। इन मैचेस के लिए टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त शुरू होगी। T20 मैचेस की टिकटों की कीमत 500 रुपए से शुरू होगी। रावलपिंडी में T20 मैचेस 20 और 24 अप्रैल को होंगे। इसके बाद 2 एक रोजा मैचेस होंगे, जिसके टिकट 300, 500 और 3000 रुपए में दस्तयाब होंगे। आखिरी 3 वनडे मैचेस कराची में 3, 5 और 7 मई को होंगे। शायकीन इनके टिकट्स 250 से 1000 रुपए तक खरीद सकेंगे। कराची में जारी 8वें T20 कॉर्पोरेट कप के चौथे रोज AZ रियल एस्टेट ने बैरिंगटन क्रिसेंट ग्रुप को मात दे दी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर पर बराह रास्त नश्र किए जा रहे हैं। कराची की मोइन खान अकेडमी में खेले गए मैच में बैरिंगटन क्रिसेंट ग्रुप ने पहले बैटिंग करते हुए 116 रन बनाए। रिजवान 39 रन बनाकर नुमाया रहे। इजहार ने 3, अब्दुल्ला और इस्माइल ने 2-2 विकेटें हासिल की। फिर हवा में बॉल और लग ऐसा एक शानदार जवाब में AZ रियल एस्टेट ने हदफ 2 गेंदे कबल 7 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। No ball. That is it. That is it. They have run on a no ball, so an extra run and a single, which means AZ Real Estate and Builders have managed to win this game by 3 wickets. अली ने 42 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। उवैस ने 23 और रिजवान ने 19 रन बनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज़ियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर कदाफी स्टेडियम लाहौर में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के सदरा नजम अजीज सेठी साहब, जो कि मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फुल फ्लैश चेयरमैन की हैसियत से अपने जो जिम्मेदारियां हैं वो संभालेंगे। और ये मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह बनने के बाद नजम अजीज सेठी साहब का पहला बाकायदा इंटरव्यू है। बहुत शुक्रिया नजम अजीज सेठी साहब, हमें वक्त देने के लिए। आपका पहला बाकायदा इंटरव्यू हमारे लिए बड़े एजाज की बात। सेठी साहब, आपके बारे में एक आम तासुर यही है और पाकिस्तान में लोग यही कहते हैं, और जो आपकी क्रिकेट बोर्ड के इंतहाई अहम रुकन शकील शेख साहब हैं, उन्होंने तो आपको फादर ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग कह दिया, लेकिन दर हकीकत एक और क्रेडिट जो आपको देना बनता है वो ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर, खासतौर पर ये जो फॉरेन बिल्डिंग बनी हुई है, उसके अलावा पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट जो आज आई है, उसके पीछे आपकी एफर्ट्स, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो इस बारे में आप सबसे पहले जानना चाहूँगा कि ख़ास तौर पर इस तनाजुर में ये जो एशिया कप की बात हो रही है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल टीमें आ गई हैं, अगर पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही थी तो भारत का स्टांस समझ आता। अब ये जो भारत स्टांस ले रहा है कि हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, तो इस पर जो आपका ग्राउंड के ऊपर जो सिचुएशन है वो यही है कि जी सारी बड़ी टीमें पाकिस्तान आ रही हैं तो फिर हम तो बैक नहीं कर सकते। जी हाँ, सूरत हाल ये है कि हमने तो बड़ा अपना मौक़िफ़ वाज़े कर दिया उनको कि अब सिक्योरिटी का इशू नहीं है। सारी दुनिया की टीम्स जो हैं वो आ गई हैं पाकिस्तान, उन्होंने खेल लिया। कोई एशिया कप का जो टीम्स हैं सब ने आके यहाँ खेल लिया, तो अब क्या सिक्योरिटी का तो इशू है नहीं। तो अगर कोई और इशू है तो हमें बताया जाए। तो जाहिर है वो वाज़े तौर पर तो नहीं बताते, सिर्फ यही कहते हैं कि गवर्नमेंट की इजाज़त नहीं है। जब हम उनसे ये कहते हैं कि हमें कोई रिटर्न कोई ख़त दिखा दें या गवर्नमेंट का कोई डायरेक्टिव दिखा दें या कोई नोटिफिकेशन दिखा दें कि आपको इजाज़त नहीं है, तो कहते हैं नहीं हो तो ऐसी, हम इसके ऊपर और बात नहीं करना चाहते, हम नहीं खेल सकते पाकिस्तान। तो अब फिर हमारा ये मौक़िफ़ था कि अगर आप पाकिस्तान में अब भी नहीं खेलेंगे तो फिर कब खेलेंगे। तो इसलिए फिर ये है कि आप हमें मजबूर कर रहे हैं कि जो यार्ड स्टिक आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर हमें भी वही यार्ड स्टिक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। हमारे यहाँ भी पब्लिक ओपिनियन है, हमारे यहाँ भी गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ भी मीडिया है। जो सलूक आप हमसे करेंगे फिर हमें भी वही सलूक करना पड़ेगा। आपने क्रिकेट को डैमेज कर रहे हैं इस तरीके से, फिर अगर और कोई डैमेज होता है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। तो मैं तो बड़े क्लियर वाज़े तौर पे उनको कह दिया है। एक मीटिंग नहीं, 3-4 मीटिंग्स हुई हैं, फॉर्मल मीटिंग भी हुई है, इनफॉर्मल मीटिंग भी हुई है। जे शाह साहब की भी हुई है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर भी हुई है।
तो मैंने तो ये कह दिया कि जी 2 वेन्यूज़ होंगे, पाकिस्तान के जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान में होंगे, इंडिया के जो मैचेस हैं वो आप न्यूट्रल वेन्यू पे कर दें। न्यूट्रल वेन्यू वो भी हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम होस्ट हैं। आप नहीं हमें कहेंगे फलानी जगह पे खेलना, आप कह सकते हैं मगर फैसला हमारा है। और तीसरी बात ये कि इंडिया के मैचेस वहाँ होंगे। अगर आखिर में पाकिस्तान इंडिया का फाइनल हो जाता है तो ठीक है, हम कंसीड करने के लिए तैयार हैं, वो फिर न्यूट्रल वेन्यू पे हो सकता है। मगर ये नहीं हो सकता कि सारे के सारा बोरी बिस्तर उठा के अब फिर आ जाएं और जब इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप हो रहा हो तो आप कहेंगे नहीं, आप हमें आपके इंडिया के अंदर आके खेलना है। तो ये इसलिए हमें ये बैलेंस रखना पड़ेगा। तो मैं तो अपनी पोजीशन वाजे कर रहा हूँ। वहाँ सारे लोगों का एक ही मौक़िफ़ था कि किसी तरीके के साथ एक ही जगह पे हो जाए, मगर जब मैंने ये बात कही उनसे तो फिर उनका एक ही मौक़िफ़ था कि ये हो नहीं सकता कि पाकिस्तान विड्रॉ कर जाए, तो फिर हमें कोई सोल्यूशन ढूंढनी चाहिए। तो वो सोल्यूशन हमने ये प्रपोज़ की है। अब उसके ऊपर वो थोड़ी बहुत अभी भी लेन देन हो रही है उसके ऊपर, और हम उनसे ये कह रहे हैं कि हमें फैसला करके दें ताकि हम फिर आगे बात बढ़ाएं। नहीं खेलना तो नहीं खेलेंगे, खेलना है तो फिर हम अगला कदम उठाएंगे कि कहाँ खेलना है। एक जो इस वक्त इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है और जो वो गुफ्तगू कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर इस तरह होगा तो जो रेवेन्यू है उसके अंदर से ही आप, चूंकि अगर पाकिस्तान में टूर्नामेंट होता है तो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स होंगी, यहाँ के होटल्स होंगे, लेकिन अगर आप किसी तीसरे मुल्क का इंतखाब करते हैं तो फिर इंटरनेशनल फ़्लाइट होंगी, वीज़े का खर्चा होगा, होटलिंग के अखराजात अलग हो जाएंगे, तो इसमें से पैसे कम हो जाएंगे। तो क्या ये काबिल कबूल होगा? देखिए, बात बड़ी सीधी सी है। ये सारी चीज़ें हमने वर्कआउट कर ली। मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, मगर इतने ज़्यादा खर्चे नहीं होंगे। और एशियन क्रिकेट काउंसिल के पास पैसे हैं और उनका फ़र्ज़ है कि ये जो भी एक्स्ट्रा खर्चा होता है वो पूरा करें। अगर नहीं होगा तो फिर इंडिया पाकिस्तान के 2 मैचेस कम से कम 2 होते हैं, 3 भी हो सकते हैं अगर दोनों फाइनल में आ जाए। तो 80% रेवेन्यू जो है वो तो इंडिया पाकिस्तान से आती है। तो क्या अगर 100 रुपये लगने हैं एक वेन्यू पे खेलने में और 2 वेन्यू में खेलने में 120 रुपये लगने हैं, वो बेहतर है कि 120 रुपये लगा के और ये दोनों जगह पे खेल लिया जाए, या ये कि फिर हम पाकिस्तान खेले ही ना तो फिर हमारे बगैर के एशिया कप क्या होगा। तो वहाँ जो 100 रुपये बनने से वहाँ 20 रुपये बनेंगे, 80 रुपये तो इंडिया पाकिस्तान के मैचेस के आते। तो हमने तो बड़े सारी होमवर्क किया हुआ है। जब मैं वहाँ गया था तो उन्होंने कहा जी कि कैसे होगा, शेड्यूल नहीं बनेगा, टाइम बहुत थोड़ा है। ये हम सब कुछ तैयार करके गए थे। हमने जाके वहाँ शेड्यूल भी प्रेजेंट कर दिया। ये मैचेस यहाँ होंगे, ये मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे। लॉजिस्टिक्स के अरेंजमेंट्स जो हैं वो आप फिक्र ना करें, हमने वर्कआउट कर लिए। हमने तो हर डिटेल वर्कआउट किया है। अब सिर्फ मुंतज़र है कि जी आप फैसला करें। हम अगर आपने 2 वेन्यूज़ में कराना है तो ग्रीन लाइट दें, नहीं कराना तो हमारी तरफ से रेड लाइट है कि हम नहीं खेलें। तो आप अपनी होस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, होस्ट पोजीशन को? और दूसरा मेरा इंपॉर्टेंट सवाल ये कि वो तीसरा मुल्क कौन सा होगा जो इंडिया के मैच के लिए आपने डिसाइड किया? देखिए, 2 सवाल है ना। एक तो ये कि हम होस्ट हैं, हमें ये भी कहा गया कि आज इंडिया और पाकिस्तान के तल्लुकात अच्छे नहीं हैं, 2 साल के बाद शायद ये मसले हल हो जाए और हम एक दूसरे के मुल्क में आके खेल सकें। तो इसलिए इस साल जो आपको होस्टिंग राइट्स मिली हैं आप स्वैप कर लें। आप बांग्लादेश को दे दें या श्रीलंका को दे दें या किसी और मुल्क को दे दें, और उनकी जो होस्टिंग राइट्स जब आएंगी 2 साल के बाद तो वो आप ले लें। तो मतलब है अपना राइट जो है इस दफ़ा छोड़ दें ताकि किसी और मुल्क में हो जाए ये, ताकि मसला ना बने। और आप जब खेलना आएंगे, जब आपकी बारी आएगी 2 साल के बाद, तो फिर उस वक्त तक शायद हालात बेहतर हो जाए। तो हमने इसको भी मुस्तरद कर दिया। हमने कहा नहीं, इसी दफ़ा फैसला होगा। क्यों? मेरे लिए ये बहुत अहम है कि अब फैसला हो। आगे आ रहा है वर्ल्ड कप, यहाँ फैसला होगा उसका असर पड़ेगा उसके ऊपर। अगर यहाँ एक हाइब्रिड मॉडल इस्टेब्लिश हो जाता है कि ये कामयाबी के साथ हम ये कर सकते हैं, तो फिर वर्ल्ड कप के अंदर भी एक हाइब्रिड मॉडल बन सकता है। अभी वहाँ बात नहीं गई, मगर मेरे ज़हन में तो ये है कि अगर हम यहाँ कामयाब हो जाते हैं एक हाइब्रिड मॉडल, तो फिर हम आईसीसी को वर्ल्ड कप के लिए भी यही प्रपोज करें। सेठी साहब, ये जो हाइब्रिड मॉडल की आप बात कर रहे हैं, वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि इंडिया इसलिए हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहा है। अगर उन्होंने एशिया कप किसी तीसरे मुल्क में खेला तो ये केस बहुत सॉलिड हो जाएगा। अगर वो हमारे पास खेलने नहीं आते तो फिर हम वर्ल्ड कप के मैचेस भी किसी तीसरे मुल्क में खेलेंगे जो शायद इंडिया को काबिल कबूल ना हो। देखिए, बड़ा सिंपल सी बात है, बांग्लादेश साथ ही है। वहाँ कलकत्ता से बांग्लादेश की फ़्लाइट आधे घंटे की फ़्लाइट है। सेंट्रल इंडिया से भी बांग्लादेश जाना हो तो
40-45 घंटे की फ्लाइट। वैसे ही इंडिया में जो वो मैचेस रखते हैं एक कोने से दूसरे कोने, वो 1.5-2 घंटे की फ्लाइट तो वैसे ही हो जाती है। इतनी ट्रैवल करनी पड़ती है इसके अंदर, वर्ल्ड कप के अंदर। उनके तो पता नहीं कितने सेंटर्स होते हैं। तो ये कोई इतनी इशू नहीं है कि अगर पाकिस्तान के मैचेस जो हैं वो मीरपुर पे हो जाएं या ढाका में हो जाए, कोई इशू नहीं है। ये अभी हमने खड़ा नहीं किया इशू। हमारे जहन में ये जरूर है, जैसे आपने कहा इंडिया के जहन में भी होगा, तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? वर्ल्ड कप तो हो जाएगा ना। क्या फ़र्क पड़ता है अगर ढाका में हो रहे हैं 4 मैचेस या 5 मैचेस या 6 मैचेस, और बाकी मैचेस जो हैं कोई कलकत्ते में हो रहा है, कोई मद्रास में हो रहा है, कोई चेन्नई में हो रहा है, कोई मुंबई में हो रहा है। आपने कौन सा रखा, श्रीलंका या बांग्लादेश? देखिए अभी कोई नहीं रखा। इसकी वजह ये है कि आप तो कह रहे थे शेड्यूल देखकर आए। शेड्यूल जो है न्यूज इसका, अच्छा, ये एशिया कप की मैं बात कर रहा हूँ। एशिया कप का जो है वो हमने अभी फैसला नहीं किया कहाँ करेंगे। वर्ल्ड कप का तो बात ये भी शुरू नहीं हुई, ठीक है, वो तो आईसीसी से बात करनी है। ये हो जाए तो फिर हम आईसीसी से बात करेंगे। इसलिए यहाँ ये है जी कि श्रीलंका चाहता है कि वहाँ खेले जाए। बांग्लादेश में बारिश हो रही है उस वक्त सितंबर अक्टूबर में, तो यूएई वाले बहुत सख्त ख्वाहिश है उनकी कि यूएई में हो। मस्कत वाले भी खड़े हो गए, वो कहते हैं हमारे यहाँ आके खेलें। उनके पास भी 1-2 स्टेडियम्स हैं। टेम्परेचर की इशू है श्रीलंका में, नॉर्थ ऑफ श्रीलंका में 2 स्टेडियम्स हैं उनके पास। वो कहते हैं वहाँ बारिशें नहीं होती या कम होती हैं, तो वहाँ खेला जा सकता है। यूएई वाले कहते हैं हमारे यहाँ खेले, बारिश वारिश का तो इशू नहीं है। मगर यूएई में टेम्परेचर काफ़ी होता है, 40 डिग्री 41 डिग्री, मस्कत में 31-32 डिग्री। तो ये सारी चीज़ें घूम रही हैं। मगर ये बात तो उस वक्त आएगी ना, पहले इन प्रिंसिपल तो फैसला करें कि एक न्यूट्रल वेन्यू होगा, वो इस्टेब्लिश हो जाए, फिर हम बताएंगे कि हमारे हिसाब से कौन सा बेहतर। सेठी साहब, इस तनाजुर में आखिरी सवाल, और वो ये कि आपने स्टांस तो लिया है और पूरे पाकिस्तान की मीडिया ने, पाकिस्तान के एक्स टेस्ट क्रिकेटर्स ने, जो लोग क्रिकेट से मोहब्बत करते हैं, उन्होंने आपको बैक किया। बैक तो खैर जब से आपने मैनेजमेंट कमेटी का चार्ज लिया है, हर कोई जो है वो आपकी गुन गा रहा है। तो आप हर शॉट मास्टर शॉट ही खेल रहे हैं। इवन आपने जो खिलाड़ियों को आराम कराया उस पर भी लोगों ने आपको सराहा। लेकिन इस वक्त जो गुफ्तगू हो रही है वो ये है कि असर रसूख भारत का एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी है, आईसीसी में भी है। तो क्या पाकिस्तान कोई बहुत सख्त स्टांस लेने के लिए तैयार है? क्योंकि जो रेवेन्यू एशियन क्रिकेट काउंसिल का है, आईसीसी का है, वो हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है। देखिए 2 इशूज हैं यहाँ, आपने सही पहचाना। एक इशू ये है कि फाइनेंसेस, अगर हम एशिया कप नहीं खेलते तो हमें कोई $3 मिलियन का लॉस है। $3 मिलियन आजकल ₹2.25 अरब बनता है जी, पूरा अरब रुपया ही बन जाता है एक्चुअली। तो $1 अरब का लॉस है हमें वहाँ। अगर हम वर्ल्ड कप नहीं खेलते या बॉयकॉट करते हैं क्योंकि वो कहते हैं नहीं इंडिया में खेले या ना खेले, तो वहाँ फिर हमारे आईसीसी के साथ तल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, बिकॉज वहाँ भी इंडिया पाकिस्तान का मैच बहुत अहम है। तो इश्यूज तो बनेंगे। जहाँ तक फाइनेंसेस का मसला है, मेरा अपना मौक़िफ़ ज़ाती तौर पे वो ये है कि अब वक्त आ गया है। एक वक्त था कि हम बड़े डिपेंडेंट थे, आईसीसी के 4 पैसे आते थे तो पीसीबी चलता था, तो इसलिए हर बात माननी पड़ती थी। अब सूरत हाल ये है कि पीएसएल ने हमें अपने पाँव पे खड़ा कर दिया। जितने पैसे आईसीसी से आते हैं उतने पैसे हमें पीएसएल से भी मिल जाते हैं। हमने फैसला ये किया है कि अगर $2-3 मिलियन लॉस भी होता है, मगर हमारी ऑनर और हमारी जो सियासी मौक़िफ़ है और आवाम की जो ख्वाहिश है, अगर उसको पूरा करना है, क्योंकि आवाम की ख्वाहिश तो ये है कि अगर वो नहीं यहाँ आते तो हम भी नहीं जाएंगे। ये तो मुझे पता है कि ये आवाम यही चाहेगी कि आप खड़े हो जाए। आवाम ये नहीं चाहेगी कि जी तुम फिर लम्बे पै दो। इसलिए अगर ऐसी सूरत हाल है तो उसमें $1 अरब क्या है। तो मेरा तो यही फैसला है कि अगर इंडिया न्यूट्रल वेन्यू हमें नहीं मिलता और वो इंसिस्ट करते हैं तो हम एशिया कप तो नहीं खेलेंगे। फिर आगे देखा जाएगा वर्ल्ड कप की जब बारी आएगी तो क्या होगा क्या नहीं होगा। एशिया कप के अंदर गवर्नमेंट का कोई खास रोल नहीं है। वर्ल्ड कप के अंदर गवर्नमेंट का रोल है। इंडिया का यहाँ आना या ना आना इंडियन गवर्नमेंट का इशू है, हमारी गवर्नमेंट का इशू नहीं। हम तो कहते हैं आ जाए। यहाँ से इंडिया जाना हमारी गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है, जैसे इंडिया की गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है जब वो यहाँ आते हैं। जब अगर वर्ल्ड कप में हमें अगर इंडिया जाना पड़ा तो हुकूमत की इजाज़त लेनी पड़ेगी।
अगर हुकूमत कहेगी चले जाएं तो हम चले जाएंगे, अगर वो कहेगी मत जाएं तो हम कहेंगे न्यूट्रल वेन्यू निकालें, जरा वहां जाके। ठीक हो गया सेठी साहब, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट इशू था जो हमने आपके साथ रैप अप कर लिया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नजम अजीज सेठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे। मेरा ये प्रिंसिपल स्टांस है, आज भी है, कल भी था और हमेशा रहेगा कि इस प्राइड को जो डैमेज करे उसको दोबारा ये प्राइड नहीं मिलनी चाहिए। दैट्स इट, एंड ऑफ स्टोरी। प्रेशर कितना था आपके ऊपर जब ये रिपोर्ट मंजर आम पर आई और आपने रिपोर्ट देखी होगी तो आप पे फोन तो आए होंगे आपके पास कि ना करें जनरल साहब? कभी नहीं। जनरल साहब कभी नहीं। आपको कोई पसंदीदा प्लेयर था? कभी नहीं। यार बड़ा अफसोस हुआ। कभी नहीं। हमने पास्ट में कोई एग्जाम्पल सेट की ही नहीं है। जो मैं बात हमेशा से करता रहा हूँ कि हमने पास्ट में पुराने वक्त की बात कर रहा हूँ, हमने कोई एग्जाम्पल ही सेट नहीं की, तो ये चीजें होती रहेंगी। दिल कितनी बार टूटा अब तो मैंने शायद वो काउंट करना मुश्किल होगा, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। उम्मीद तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन जब अनाउंस हुआ और नाम नहीं था तो फिर तो जाहिर बात है हर बंदा डिसअपॉइंट होता है, चाहे मैं हो कोई भी हो। जब वो उम्मीद रखता है और वो पूरा नहीं होता तो सेम वही सिचुएशन मेरी भी। जियो सुपर पे रमजान क्रिकेट का भरपूर मजा, भरपूर एनर्जी के साथ भरपूर क्रिकेट।
जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट के सुपरस्टार्स सरफराज अहमद, खुशदिल शाह, शान मसूद, असद शफीक, हैदर अली, आजम खान, अनवर अली, उमर अकमल, फहीम अशरफ, साइम अयूब, मेपल लीफ एचडी 8 कॉर्पोरेट T20 कप पावर्ड बाय पार्क व्यू सिटी 7 से 15 अप्रैल DH स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान अकेडमी से बराह रास्त। सेफ जियो सुपर पे, जीत के जियो। 1978 में भारत का दौरा है पाकिस्तान। जुना स्टेडियम सियालकोट का मैदान। दूसरा एक रोजा मैच। पाकिस्तान के कप्तान मुश्ताक मोहम्मद का टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला। भारतीय टीम 34.2 ओवर्स में सिर्फ 79 रन बनाकर ऑल आउट। मोहिंदर अमरनाथ 34 रन के साथ नुमाया स्कोरर। पाकिस्तान की जानिब से हसन जमील की 3 जबकि सिकंदर बख्श और सलीम अल्ताफ की 2 विकेटें। पाकिस्तान ने मतलूबा हदफ बआसानी 16.5 ओवर्स में हासिल कर लिया। जहीर अब्बास की 48 रन की फातिहाना इनिंग्स। भारत की जानिब से कपिल देव और सुनील गावस्कर की एक विकेट। पाकिस्तान की मैच में 8 विकेटों से फतह। वनडे क्रिकेट की तारीख में पाकिस्तान की भारत के खिलाफ ये पहली फतह थी। अब आ जाते हैं आपकी चेयरमैनशिप की तरफ। सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि 120 दिन आपको दिए गए थे मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह की हैसियत से। ऑलमोस्ट तकरीबन वो अपने अख्तामी और मेरा ख्याल है कि शायद काउंटडाउन शुरू हो गया। अब वो आपके फुल फ्लैश बोर्ड कब रन करने के लिए जा रहे हैं आप? आपके गवर्निंग बोर्ड की क्या सिचुएशन है? डिपार्टमेंट क्रिकेट को आप लेकर आ रहे थे, रीजन के क्या मामला हैं? कब तक आप जो है वो फुल टाइम चेयरमैन की हैसियत से टेक ओवर करने लगे? अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन 4 रीजन्स इलेक्टेड प्रेसिडेंट्स ने आना है और 4 नॉमिनेशंस आने हैं डिपार्टमेंट से। कोई 7-8 डिपार्टमेंट तैयार हो गए हैं, उनमें से 5 ने ऑलरेडी हमें ओके कर दिया है कि हम में से हम भेज रहे हैं अपने नॉमिनीज। तो डिपार्टमेंटल क्रिकेट की रिप्रेजेंटेशन BOG में तैयार है। रीजन्स में से भी 7 रीजन्स के इलेक्शंस हो गए हैं और हमने ऑलरेडी फैसला कर लिया है मैनेजमेंट कमेटी ने कि उनमें से 4 लेने हैं हमने। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तैयार है। अब रह गया इलेक्शन ऑफ द चेयरमैन। अभी तक इलेक्शन ऑफ द चेयरमैन का शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ कि अभी भी 20 दिन पड़े हैं मैनेजमेंट कमेटी के, 18-20 दिन पड़े हैं। तो इस सूरत में अब इंतज़ार ये है 2 चीज़ों की कि प्राइम मिनिस्टर ने 2 नॉमिनीज देने हैं और फिर प्राइम मिनिस्टर ने जब 2 नॉमिनीज हो जाएं और इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो जाए तो एक जज आर्बिट्रेटर देना होता है। वो होता ही है कि अगर जब इलेक्शन होती है तो उसमें अगर कोई चैलेंज आ जाए फ्रॉम विद इन द बोर्ड कि इलेक्शन ठीक नहीं हुई तो उसकी एक अपील होती है। वो अपील के लिए फिर 7 दिन चाहिए होते हैं, उसके लिए फिर एक और जज अपॉइंट करना पड़ता है। तो ये 2 चीज़ें अब प्राइम मिनिस्टर ने अपॉइंट करनी है। तो मेरा ख्याल है कि अगले 7-8 दिन के अंदर ये सब मामला तय हो जाएगा और अगले 10-15 दिन में मैक्सिमम बोर्ड के इलेक्शन हो जाएंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अंदर से आप खुश हैं कि नवाज शरीफ साहब ने जब आप लंदन में उनसे मिले थे कहा गया कि जी बस हो गया, सेठी साहब अब आ रहे हैं, तब आ रहे हैं, लेकिन रमीज हसन राजा साहब मौजूद रहे, पिचेस का जो मामला रहा, उसके अलावा क्रिकेट बोर्ड की गवर्नेंस के जो मामला रहे, फिर इंग्लैंड के खिलाफ हम सीरीज हार गए, इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज हार गए, वर्ल्ड कप में हम फाइनल में हार गए। तो आपको लगता है कि जो हुआ ठीक ही हुआ, थोड़ा देर से आ गया? देखिए, बेहतर तरीके से हो सकता था। आपको याद होगा कि जब एक नई हुकूमत यहाँ आई थी, इमरान खान साहब जिस दिन इलेक्ट हुए, मैं रिज़ाइन कर दिया था क्योंकि मुझे एहसास था इस बात का कि PCB किसी गवर्नमेंट के सपोर्ट के बगैर नहीं चल सकता। बहुत सी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। हर दूसरे दिन तो हम पहुँचे होते हैं गवर्नमेंट से कि जी ये सिक्योरिटी का ये मसला है, वीज़े का ये मसला है, ग्राउंड्स का ये मसला है, एडमिनिस्ट्रेशन का ये मसला है। तो मुझे इस बात का एहसास था क्योंकि मैं मीडिया में था तो मीडिया में इमरान खान साहब के ज़हन में ये था कि मैं उनके ख़िलाफ़ हूँ। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी, मीडिया में हमें एक बैलेंस रखना पड़ता है मगर उनका ये ज़हन था और मुझे इस बात का एहसास था कि अगर मैं टिका रहा तो उन्होंने मुझे टिकने नहीं देना। आपने देखा पहले भी हुआ ना, आना जाना रहा, तो मैंने कहा वो ठीक चीज़। तो मैंने रिज़ाइन कर दिया और मैंने खान साहब को पैगाम दिया
कि अब आप जो चाहें कर लें। उन्होंने फैसला किया कि मानी साहब को लाना है, तो वो ले आए। फिर उन्होंने एक और फैसला किया कि जी सारा डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर भी चेंज कर देना है, वो भी उन्होंने चेंज कर दिया। साल लगाया और कुछ भी नहीं, यहाँ सारा कुछ लिम्बो में रहा। फिर जाके वो नई कॉन्स्टिट्यूशन ला के 2019 में वो भी चेंज कर दिया। फिर उसको एक साल और लगा, वो चल ही नहीं रही थी इनसे। फिर इन्होंने खुद ही करने शुरू कर दिया सारा कुछ, जो कि प्राइवेट सेक्टर ने करना था। तो मतलब है कि वो सिस्टम भी नहीं चला और मानी साहब भी नहीं चल सके। फिर रमीज राजा साहब को ले आए, अपने बंदे को। रमीज राजा की विकेट आपने गिरा दी? मैंने नहीं गिराई मैंने नहीं गिराई। स्टंप किया आपने, बोल्ड किया? नहीं, कुछ भी नहीं किया। मैं चुप करके बैठा रहा। मेरी ये उम्मीद थी कि अगर मियाँ साहब ने, प्राइम मिनिस्टर मुझे चाहते हैं कि मैं वापस जाके वो काम जो मैं छोड़ आया था अधूरा, उसको कंप्लीट करूं, तो बड़ा सिंपल सी चीज़। अच्छा, पिछली बार आपने मुझसे कहा था कि मियाँ साहब ने मुझे बुलाया, ऐवान वजीर आजम, उन्होंने कहा सेठी साहब टेक ओवर कर। वो तो इस बार आपकी ख्वाहिश थी या मियाँ साहब की? नहीं, देखिए इस वक्त ख्वाहिश तो जाहिर है कहीं से आती है। अब बात यह है कि मेरा ये ख्याल था कि राजा साहब रिजाइन कर देंगे, क्योंकि आई थॉट कि अब दैट्स द ऑनरेबल थिंग टू डू, और सही चीज़ भी है कि उसके बगैर चल नहीं सकता। तो जब उन्होंने नहीं रिजाइन किया तो फिर मेरे पास दो ऑप्शंस थे। एक ये था कि मैं गवर्नमेंट को कहता चले जी फिर जैसे छुट्टी कराई जाती है छुट्टी कराएं और मुझे इंस्टॉल कर दें, क्योंकि वो तो आईनी तौर पे बिल्कुल अलाउड है। ठीक। दूसरी ये था कि राजा साहब थोड़ा और झूले ले ले, देख ले क्या करते हैं, क्योंकि उनका ये मौक़िफ़ था जो कि पहुंचाया गया हुकूमत तक कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, फलानी टीम अगले दिन 10 दिन में आ रही है, वो डिसरप्ट हो जाएगी अगर मैं चला गया, वगैरह वगैरह। तो हर महीने वो कोई ना कोई बात चल पड़ती थी। तो मैं चुप करके बैठ गया। मैंने कहा चलो क्या फ़र्क पड़ता है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। तो फिर वही हुआ कि एक स्टेज ऐसी आई कि यही फैसला हुआ कि अच्छा जी अब टाइम टू गो। तो अगर वो खुद चले जाते तो बेहतर था, वो खुद नहीं गए तो फिर फारग कर दिया गया। तो ये चीज़ें होती हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ जब वक्त आता है तो खुद जाना चाहिए। सेठी साहब, वैसे तो ऑन एंड ऑफ आपसे मुलाकात होती रहती है, लेकिन क्योंकि ऑन एयर इस वक्त हम हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि 2018 में आप इस क्रिकेट बोर्ड को छोड़कर गए, 2018 से 2022 तक इस क्रिकेट बोर्ड ने कहाँ से कहाँ तक का सफ़र किया, और आप दोबारा जाकर जब इस निशिस्त पे बैठे तो कितनी फाइलें ऊपर नीचे हो चुकी थी और कितना मैस क्रिएट हो चुका था? बहुत बड़ा मैस है जी। मैं अगर शुरू हो जाऊं कि कितना बड़ा मैस है, तो मतलब यही इस मुल्क में होता है। तो मैं दो टोक कह सकता हूं कि कठपुतली चेयरमैन थे एहसान मानी, रमीज राजा नाकाम चेयरमैन थे। कि मेरे हिसाब से तो जो काम होने चाहिए थे वो सही तरीके से वो नहीं हुए, और ये सारा डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर चेंज करना, बाहर से लोग को इम्पोर्ट करके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर रखना, बड़ी बड़ी तनख्वाहें देनी और नए नए प्रोजेक्ट्स करने जो चल नहीं सके, कोई भी नहीं चल सकता इनका प्रोजेक्ट। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बंद, जो मैं चीज़ें शुरू करके गया था वहीं की वहीं खड़ी हैं। ये मुझे याद आया कि जब मैं 2013-14 में यहाँ आया हूँ तो यहाँ एक फॉरेन पवेलियन 8 साल से इनकम्प्लीट पड़ा था, एक ढांचा पड़ा हुआ था। हमने आके उसको चेंज करके टॉप आर्किटेक्ट्स लेके बनवा दिया। इसी तरीके के साथ कुर्सियाँ बनवाई, सब कुछ किया। और अभी आपसे आने से पहले अभी पूरी एक ब्रीफिंग हो रही थी कि पिंडी स्टेडियम के अंदर सारी कुर्सियां लगनी चाहिए, मुल्तान में कुर्सियां लगनी चाहिए, कराची में फॉरेन पवेलियन बनना चाहिए। ये सारा अभी ब्रीफिंग लेके आया और मैंने कहा गो हेड, पैसे मैं देता हूँ आपको, आप शुरू करें ये सारा। ये 4 साल पहले भी हो सकते थे, नहीं हुआ यहाँ कुछ भी। तो जो क्रिकेट चल रही थी, जो लोग एम्प्लॉयड थे, सारे फारग हो गए, कोई नया स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया। अब हमें फिर से जिसे कहते हैं ड्राइंग बोर्ड से शुरू करना पड़ रहा है। मैं आपको बताऊँ यार, मुझे लोग अगर आप पूछे कि चैलेंज जो 2013 में कोई चैलेंज इतना था ही नहीं जो स्वाइप PSL है, बाकी सब चीज़ें हस्बे मामूल चल रही थी। इस दफ़ा इतने चैलेंजेस हैं, इतनी चीज़ें जो चलनी चाहिए थी नहीं चली और बैठ गई हैं, उनको फिर से शुरू करना पड़ता है। इस दफ़ा चैलेंजेस 100 टाइम्स मोर देन द चैलेंज दैट आई फेस्ड इन 2013-14। और इसलिए कभी कभी मुझे खौफ भी आता है, यार इतना कुछ करना है यहाँ, 4 साल में वही कुछ नहीं है, पता नहीं क्या करते रहे हैं ये लोग। मगर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज वहाँ लीगल चीज़ें बहुत सी हैं, और ये बुरी बात है कि आपके प्रीडेसेसर्स जो हैं उनकी आप बुरी बातें करें। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि बहुत कुछ हो सकता था जो नहीं हुआ। से आए हैं तो आपके हर फैसले को जो है वो लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया है। क्रिकेट के कॉर्नर से जो है तनकीद आप पे ऐसा ऐसी हो नहीं रही, लेकिन ये जो मिकी आर्थर वाला मामला है, इस पर लोग जो है थोड़ा आपसे इत्तेफाक नहीं कर रहे।
और उनका कहना यह है कि अगर ठीक है आप मिकी आर्थर को ला रहे थे 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन अगर मिकी आर्थर डार्बीशायर नहीं छोड़ना चाहते तो ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, कोई फ्रेंचाइज क्रिकेट नहीं है कि आप डार्बीशायर से जो है मिकी आर्थर को पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो है अपॉइंट कर रहे हैं। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये जो फॉरेन कोचेज आप लेकर आ रहे हैं, चले मिकी आर्थर तो आपके डायरेक्टर हैं, ये पाकिस्तान में रहेंगे, पाकिस्तान में वक्त गुजारेंगे, पाकिस्तान में गेम प्लान करेंगे या सीरीज खत्म हुई तो हो गए? मिकी आर्थर तो डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशंस, वो एशिया कप पे जो भी इंडिया का मैच होगा वो ही विल बी प्रेजेंट, और उसके बाद वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया वो फुल फ्लेज्ड साथ होंगे सारा वक्त। बाकी सारे फुल टाइम आ रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि यानी सीरीज खत्म होने के बाद नहीं जाएंगे? नहीं इधर रहेंगे बिल्कुल 100%। एंड व्हाट अबाउट यासिर अरफात? उनके हवाले से सुन रहे थे कि जी वो पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच होंगे। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मेरी कभी यासिर अरफात से ना बातचीत हुई है ना कोई खताबत हुई लेकिन है। मिकी आर्थर ने उनसे रब्ता किया, उनकी अवेलेबिलिटी पूछी, उनके साथ गुफ्तगू की, उनसे मुलाकात की। मिकी आर्थर ने मेरा ख्याल है 10-15 लोगों से गुफ्तगू की, क्योंकि वो अपनी टीम बनाना चाह रहा था। तो सिर्फ उन्होंने यासिर से बात नहीं की, उन्होंने और लोगों से भी बात की, और मैं उनके नाम नहीं लूँगा। किसी ने कहा नहीं मैं नहीं अवेलेबल, किसी ने कहा मैं अवेलेबल हूँ, मुझे इतने पैसे चाहिए। मुझे पूछा कि इतने पैसे अफोर्ड हो सकते हैं कि नहीं, मैंने कहा ये हमारा बजट है। ये चीज़ चलती रही है, अब 2-3 महीने तो हो गए इस चीज़ को, ये सारी बातें चलते हुए। तो इसीलिए कि उसने कुछ ना कुछ लोग सेलेक्ट किए हुए थे, या ये अगर ये नहीं तो ये नहीं तो ये। तो उसमें यासर को भी उसने कंसल्ट किया होगा या किया था, यासर का ये कहना है कि उसने किया। आपकी तरफ से कोई बात? मेरी तरफ से कभी कोई बात नहीं हुई यासर के ऊपर, क्योंकि मेरा एक मौक़िफ़ है कि अगर मैंने याया को टीम लीडर बनाया है तो फिर याया अपनी टीम इकट्ठी करेगा। मैं नहीं कहूँगा कि याया तुमने टीम बनाई है मगर अमजद भट्टी को भी बीच में डालो, मैं कभी नहीं कहूँगा। अगर आप कहेंगे कि मैंने ABCD की टीम ला रहा हूँ, इट्स योर, उसके बाद डिलीवरी आपने देनी है। तो मेरा कोई मुदाखलत नहीं है, किसी किस्म की नहीं है। जब मैं चीफ सेलेक्टर भी लगाता हूं तो मैं कहता हूं नो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जाके अनाउंस करें, आप जाके देखें क्या होता है। जब कोई स्ट्रेटेजिक फैसला करना होता है तो मैं खुद आ जाऊँ। नजम सेठी साहब, इमरान खान साहब बड़ी तनकीद कर रहे थे जब आप माजी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आपने टेक ओवर किया, और जब इवन अब भी आपने मैनेजमेंट कमेटी की हैसियत से, चेयरमैन की हैसियत से जिम्मेदारियां संभाली, तब भी उन्होंने आप पर तनकीद की। लेकिन आजकल वो PCB के हवाले से ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहे। एक जनरल परसेप्शन ये है कि जाकिर खान साहब जो 3 अप्रैल को रिटायर हुए, बहुत कुर्बत है उनकी इमरान खान साहब से, उनको आपने 1 महीने की एक्सटेंशन दी, तो ये गिव एंड टेक है? देखिए, खान साहब के साथ कोई गिव एंड टेक नहीं होती, वो सिर्फ टेक ही करते हैं, गिव शिप कोई नहीं करते, आपको भी पता है इस बात का। तो मेरी तो उनसे कोई रब्ता ही नहीं, ना ही उनकी तरफ से कोई पैगाम आया, ना ही मेरी तरफ से उनको कोई पैगाम नहीं है। तो ये तो क्लियर होगी बात। अब आइए जाकिर साहब की बात। ठीक है, वो रिटायर हो गए, 60 साल की उम्र होगी उनकी, रिटायरमेंट। 1 साल की एक्सटेंशन मैंने 1 महीने की एक्सटेंशन इसलिए दी है, कोई न्यूजीलैंड टूर इस वक्त हेड ऑफ इंटरनेशनल, उन्होंने सारे प्रोग्रामिंग्स की थी, FTP जो सारे बने हुए हैं जाकिर साहब। वही बात, इन द मिडल ऑफ समथिंग अगर आप कमांड चेंज कर दें तो बड़े प्रॉब्लम्स बन जाते हैं। जाकिर के बड़े अच्छे तल्लुकात हैं इंटरनेशनल क्रिकेट बोर्ड्स के साथ। तो मैंने ये सोचा कि अभी इस किस्म के फैसले का वक्त नहीं है, अभी किसी किस्म की डिस्टेबलाइजेशन नहीं होनी चाहिए। मैं अगर उनको फारग करता हूं तो लोग कहेंगे विक्टिमाइजेशन की है, खान साहब की वजह से निकाल दिया। मैं रखता हूं तो लोग कहेंगे कि खान साहब की वजह से शायद रख लिया। तो बेहतर यही है कि इस फैसले को मुलतवी कर दिया जाए उस वक्त तक जब तक मैं फुल कमांड में हूँ, और फिर मैं अपने बोर्ड से पूछूँ, और फिर मैं जाकिर को भी बुलाऊँ और पूछूँ कि आप किस किस्म की कंट्रीब्यूशन, अगर आपसे इंटरनेशनल अरेना हटाया जाए, किसी और को मैं लगाना चाहूँगा, तो क्या आप और कहाँ फिट हो सकते हैं। मेरा ख्याल है विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ, और इसीलिए मैंने किसी को निकाला नहीं है, सच ऑप्शंस दिए हैं। इस मुल्क में होता ही है, जो आता है वो विक्टिमाइजेशन की तरफ, इसको निकालो, वो मेरा बंदा नहीं है, ये फलाने का बंदा है, ये मैं फैसला करूंगा अगले महीने। आपका क्रिकेट में जो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वो पाकिस्तान सुपर लीग है। इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी के हवाले से आपके किरदार को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग, आप जिस तरह कह रहे थे कि अब मेरे पास एक ऐसा जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट को कुशन देने के लिए पाकिस्तान सुपर लीग की शक्ल में चीज़ मौजूद है कि अगर ICC से हटकर भी हम चलने की कोशिश करें तो हम जो है वो सरवाइव कर सकते हैं। लोग ये जानना चाह रहे हैं 6 से 8 टीमें कब होंगी अगर आपने इसको इतना बड़ा ब्रांड बनाना है। तो ये भी कह रहे हैं कि जो आपकी फ्रेंचाइजीज हैं उनकी तरफ से बाउंडिंग है कि रमीज राजा साहब उनके साथ कोई बाउंड बनाकर चले गए कि
10 साल तक जो है वो 8 टीमें नहीं हो सकती? देखिए, मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट बड़े गौर से पढ़ा है। ऐसा है? ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें ये लिखा है कि आप और टीम्स नहीं ऐड करेंगे कि अगर उसके ऐड करने के साथ जो 6 फ्रेंचाइजीज हैं उनकी जो रेवेन्यू लॉस हो जाता है, मगर अगर हम उनका रेवेन्यू इंक्रीज कर दें तो फिर उनको कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। तो मैं ये इसी चीज़ के ऊपर होमवर्क कर रहा हूँ कि जब वो मेरा होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा तो हम फ्रेंचाइजी को बुलाएंगे, हम कहेंगे जी ये है, हम 2 टीमें ऐड करना चाह रहे हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिख देते हैं कि इस साल जितने पैसे आपको बने हैं इससे कम नहीं बनेंगे, इससे ज़्यादा ही बनेंगे। और अगर शॉर्टफॉल हो जाती है, क्योंकि बांटना पड़ता है ना जितना रेवेन्यू आता है, अगर 100 रुपये आते हैं 8 टीमों के और 90 रुपये आते हैं 6 टीमों के, तो 6 टीमों में 90 रुपये में हर एक का हिस्सा बढ़ जाता है, और 8 टीमें जब हो जाएं तो 100, तो वो कम हो जाता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप इंतज़ार करें, मैं आपको फॉर्मूला ऐसा दूंगा कि आपको पिछले साल से ज़्यादा पैसे। आपने एक मुश्किल फैसला किया था 2016 में, जब कुछ सोच नहीं रहा था, पीएसएल को आपने लॉन्च किया यूएई में। 2018 में जब आप बोर्ड को छोड़कर गए, 2018 से 2022 तक जो पीएसएल मुनक्किद हुए, आपके ख्याल में पीएसएल ऊपर गया या मानी साहब और रमीज राजा के दौर में पीएसएल भी डैमेज हुआ? देखिए, मैं तो समझता हूँ डैमेज हुआ है। अब उसमें कोई इनकॉम्पिटेंस थी या कोविड की वजह से 2 साल डिसरप्ट हुआ, होना नहीं चाहिए था। बबल ख़राब हो गया, सिक्योरिटी ठीक नहीं थी, हर किस्म के इश्यूज थे, इन्होंने नहीं हैंडल किए, सीधी सी बात। और अगर एक चीज़ चलती चलती रुक जाए गाड़ी और उसको फिर आप चलाने शुरू करें तो वो चीज़ बनती नहीं है ना, मोमेंटम नहीं बनता। 2 साल तो इन्होंने ज़ाया कर दिए। 1 साल ये लोग, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, दुबई चले गए और वो कोई हादसा हो गया इंडिया पाकिस्तान का और उनकी प्रोडक्शन कंपनी वॉकआउट कर दी। और इधर से कहते हैं कि हम इंडियन कंपनीज को के साथ काम नहीं करते, इंडियन कंपनी के साथ काम किया और वो शुरू नहीं हुआ और उठ के भाग गए, 24 घंटे का नोटिस नहीं दिया उन्होंने, तो फिर इन्होंने भाग दौड़ करनी पड़ी किसी और को इकट्ठा करना। तो इस किस्म की इनसे इनकॉम्पिटेंस तो हुई है। मगर पीएसएल का जो ब्रांड है, हमने जब मैं आया हूँ यहाँ तो मैंने आके पूछा कि भाई 2 महीने रह गए हैं तो पीएसएल की क्या तैयारी है? आप यकीन करें आई वाज शॉक्ड, कोई तैयारी नहीं थी। सिर्फ $1 लाख रखे हुए थे पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी के लिए। अब ओपनिंग सेरेमनी ऐसी चीज़ होती है जो लॉन्च करती है, अगर लॉन्च ही ठीक ना हो तो वो हाइप नहीं क्रिएट होती। वो मार्केटिंग के लिए वो बहुत ज़रूरी होता है कि आप एक एक्साइटमेंट क्रिएट करें, माहौल चेंज करें कि आ रहा पीएसएल आ गया, स्टार्स आ गए। कुछ भी नहीं था, तैयारी नहीं थी। तो मैंने पूछा कि क्या हो रहा है? कहने लगे जी हमारे पास तो रिसोर्स भी नहीं, हमने तो बंदे भी मांगे थे, वो भी नहीं मिले। क्यों? कि जो फोकस था वो जूनियर लीग के ऊपर, और जी पीएसएल होता रहेगा, जूनियर लीग हमने बनानी है। अच्छा, अब बात यह है कि फिर मुझे आके फिर वो देखना पड़ा और फिर मैंने कहा कि ऐसे तो नहीं चलेगा। तो ये पीएसएल की रिवाइवल हुई है और मैं समझता हूँ 4 साल किसी ने कोई तवज्जो नहीं दी पीएसएल की तरफ। वो उसका एक अपना मोमेंटम था जिसकी वजह से वो चलता रहा, और क्योंकि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए थे ब्रॉडकास्ट के, तो वो नहीं था। मगर वो जो मोमेंटम था वो टूट गया था। और अब सब लोग मुझे यही कहते हैं कि जी जान आ गई पीएसएल में फिर से, तो जान डालनी पड़ती है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नजम अजीज सेठी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे। मेरा ये प्रिंसिपल स्टांस आज भी है, कल भी था और हमेशा रहेगा कि इस प्राइड को जो डैमेज करे उसको दोबारा ये प्राइड नहीं मिलनी चाहिए। दैट्स इट, एंड ऑफ स्टोरी। प्रेशर कितना था आपके ऊपर जब ये रिपोर्ट मंजर आम पर आई और आपने रिपोर्ट देखी होगी
तो आप पे फोन तो आए होंगे आपके पास कि ना करें जनरल साहब, कभी नहीं, जनरल साहब कभी नहीं। आपको कोई पसंदीदा प्लेयर था? कभी नहीं। यार बड़ा अफसोस हुआ। आप कभी नहीं। हमने पास्ट में कोई एग्जाम्पल सेट की ही नहीं है। जो मैं बात हमेशा से करता रहा हूँ कि हमने पास्ट में पुराने वक्त की बात कर रहा हूँ, हमने कोई एग्जाम्पल ही सेट नहीं की, तो ये चीजें होती रहेंगी। दिल कितनी बार टूटा अब तो मैंने शायद वो काउंट करना मुश्किल होगा, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। उम्मीद तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन जब अनाउंस हुआ और नाम नहीं था तो फिर तो जाहिर बात है हर बंदा डिसअपॉइंट होता है, चाहे मैं हो कोई भी हो। जब वो उम्मीद रखता है और वो पूरा नहीं होता तो सेम वही सिचुएशन मेरी भी। जियो सुपर पे रमजान क्रिकेट का भरपूर मजा, भरपूर एनर्जी के साथ भरपूर क्रिकेट, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट के सुपरस्टार्स सरफराज अहमद, खुशदिल शाह, शान मसूद, असद शफीक, हैदर अली, आजम खान, अनवर अली, उमर अकमल, फहीम अशरफ, साइम अयूब, मेपल लीफ एचडी पट्टी 8 कॉर्पोरेट T20 कप, पावर्ड बाय पार्क व्यू सिटी, 7 से 15 अप्रैल DH स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान अकेडमी से बराह रास्त। सेफ जियो सुपर पे, जीत के जियो। मेरा ये प्रिंसिपल स्टांस आज भी है, कल भी था और हमेशा रहेगा कि इस प्राइड को जो डैमेज करे उसको दोबारा ये प्राइड नहीं मिलनी चाहिए। दैट्स इट, एंड ऑफ स्टोरी। प्रेशर कितना था आपके ऊपर जब ये रिपोर्ट मंजर आम पर आई और आपने रिपोर्ट देखी होगी? तो आप पे फोन तो आए होंगे आपके पास कि ना करें जनरल साहब, कभी नहीं। जनरल साहब कभी नहीं। आपको कोई पसंदीदा प्लेयर था? कभी नहीं। यार बड़ा अफसोस हुआ। आप कभी नहीं। हमने पास्ट में कोई एग्जाम्पल सेट की ही नहीं है। जो मैं बात हमेशा से करता रहा हूँ कि हमने पास्ट में पुराने वक्त की बात कर रहा हूँ, हमने कोई एग्जाम्पल ही सेट नहीं की, तो ये चीजें होती रहेंगी। दिल कितनी बार टूटा अब तो मैंने शायद वो काउंट करना मुश्किल होगा, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। उम्मीद तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन जब अनाउंस हुआ और नाम नहीं था तो फिर तो जाहिर बात है हर बंदा डिसअपॉइंट होता है, चाहे मैं हो कोई भी हो। जब वो उम्मीद रखता है और वो पूरा नहीं होता तो सेम वही सिचुएशन मेरी भी।